और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर शुरू किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अटल जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी के रूप में प्रधानमंत्री पद पर 5 साल पूरे किए। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सफलता के साथ ऐसे समय सरकार चलाई जब देश संकट के दौर से गुजर रहा था। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल करना, करगिल युद्ध विजय जैसे कदमों के लिए तो जाना जाता ही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो या गांव-गांव में पक्की सड़क पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनके कार्यकाल में देश के बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूती मिली। अटल सरकार के दौरान ही 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोट कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया गया था। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीकी से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका मजबूती से सामना करते हुए आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। वाजपेयी जी के राजनीति में स्थापित किए गए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अटल जी को आज देश दे रहा है विनम्र श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और मिड डे प्राइम में अब वक्त चला है व्यापार और अर्थजगत की खबरों को जानने का, और इन्हें जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अजय मिश्र के पास। तो अजय, क्या कुछ खास है आज व्यापार प्राइम में? देखिए, अब शुरुआत करते हैं खादी और ग्रामोद्योग से, और खबर अच्छी है। खादी और ग्रामोद्योग के कारोबार में उत्साहजनक बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2018-19 की बात करें तो देश में खादी का कुल कारोबार बढ़ करके 75,000 करोड़ की सीमा को भी पार कर गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद खादी को लेकर के काफ़ी जागरूकता दिखी है और एग्रेसिव मार्केटिंग के दम पर खादी ने ये रिकॉर्ड समय में उपलब्धि हासिल की। आपको बताएं कि 2014-15 में करीब 33,000 करोड़ रुपए का कारोबार था। इस साल लक्ष्य है कि वो जो ग्रोथ रेट है उसको 20% किया जाए। 18-19 में जो ग्रोथ थी वो 25% के करीब रही थी, और जो ज़्यादा ग्रोथ है वो हमने ग्रामोद्योग में देखा, यानी जो ग्रामीण इलाकों में जो उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। खादी की अगर बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए की पूरी सेल्स दिखी है, और ग्रामोद्योग में भी इस वक्त जो लोग जुड़े हुए हैं वो करीब 1.5 करोड़,
यानी जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। इस लिहाज से KVSE के साथ जुड़ी यह खबर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान से उबरने की कोशिश में है। 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 37,101 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25 अंकों की तेजी के साथ 11,043 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में रिलायंस कैपिटल, सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, लेमन ट्री के शेयरों में तेजी का माहौल है। निफ्टी में एस बैंक, ONGC, IOC, सनफार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी का माहौल है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में IDBI बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैन इरिगेशन सिस्टम्स, आरती इंडस्ट्रीज, कॉक्स एंड किंग्स के शेयरों में मंदी का माहौल दिखा। निफ्टी में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, PIDL, हीरो मोटोकॉर्प, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जोरदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। नायमोक्स क्रूड 1.08% की मजबूती के साथ $55 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड में तेजी दिखाई दे रही है और ये 0.81% की मजबूती के साथ $59 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय व्यापार प्राइम के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। रूस में एक विमान के पायलट की सूझबूझ से विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। दरअसल मॉस्को से उड़ान भरते ही इस विमान के दोनों इंजनों में एक पक्षी के टकराने से खराबी आ गई, लेकिन पायलट की कुशलता के कारण विमान को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। रूस के आपातकाल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 5 बच्चों सहित 23 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ग्रीस के एवियर द्वीप के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मियों को लगातार चौथे दिन भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस काम में 400 दमकल कर्मियों, 11 हेलीकॉप्टरों और 13 विमानों की सेवाएं ली जा रही हैं। इनमें इटली और स्पेन का एक विमान भी शामिल है। ये आग पाइन के घने जंगलों में भीतरी हिस्से में लगी है, जहां जमीनी रास्ते से पहुंचना बेहद मुश्किल है। इस इलाके में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। हालांकि ये क्षेत्र रिहायशी इलाकों से दूर है। ग्रीस ने आग बुझाने के काम में अन्य यूरोपीय देशों से भी सहयोग मांगा है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही। माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान।
और फिलहाल आपको सीधे लिए चल रहे हैं हरियाणा के जींद, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया, हरियाणा की जनता ने करा दिया। और इस बार भी जब चुनाव होगा, मुझे मालूम है कि वीर भूमि फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देगी, हमारे मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देगी। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार बनी है, कहने को तो 75 दिन हुए हैं, मगर जो सरकारें 5 साल में काम नहीं करती है, वो काम मोदी जी की सरकार ने 75 दिन के अंदर पूरा करने का काम। सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में लेह, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर, ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा, आतंकवाद से मुक्त होगा। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम, और वो काम वो ही कर सकता है जिनके मन में वोट बैंक की लालच नहीं। वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है, मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा फैसले मां भारती के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए लिए। और आज 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, 35 से इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है, कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था। वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी। अभी अभी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी। कारगिल के युद्ध के समय से सेकटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की। सरकारें आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए
तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करे, इसलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी। मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि इस देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी। थल सेना, नभ सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी। ये दुश्मन के लिए ब्रज से कम नहीं होगी। ब्रज का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होगी। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को, गट्टम के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए करा था। अब छोटे, मझले, बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, कभी उनके लिए कोई सरकारों ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बुढ़ापे की चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्रालय का गठन किया। पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक सब जगह पानी की हम जरूरियात महसूस करते हैं। कई हिस्सों में ज्यादा पानी है, कई हिस्सों में पानी की कमी है। ये जल मंत्रालय सभी प्रकार के पानी के मैनेजमेंट का चिंता करेगा। वो नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा, वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा, वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा, वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा, वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले 5 साल के अंदर, इसकी भी चिंता ये जल शक्ति मंत्रालय कराने वाला है। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना चाहता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पेशा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम कर दिया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद ये हमारा लाल आया,
और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त करने का। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश दिया। मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल में मैं आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते। मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया है। केरोसिन मुक्त राज्य, मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम हुए। महिलाओं के पुलिस थाने, जब खट्टर सरकार बनी 2 थे, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने हैं। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूट सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम ये मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं। देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में हरियाणा का है। That was Home Minister and BJP Chief Amit Shah addressing a public rally in Jind, Haryana. He was speaking about the key achievements of the Modi government in the second term, whether we talk about abrogation of Article 370, ending triple talaq, or the vision ahead of Chief of Defence Staff position he mentioned about. He also complimented the state government led by Manohar Lal, and he spoke about how corruption has ended in the state under his rule, and also there's been a boost to employment. Those were the highlights, and he also appealed to the people to continue to support Prime Minister Modi and Chief Minister Manohar Lal. Good afternoon and welcome to Midday Prime. I'm Shubhendu Ghosh. In the next 1 hour, we'll get you all the updates from India and the world. Let's begin with the top stories at this hour. Chief Justice of India pulls out petitioner against abrogation of Article 370 for not filing relevant documents. 3-judge bench adjourns hearing without passing order on the petition. Floods subside in Kerala as no red or orange alert for any district today. People start returning to their homes as the situation normalizes. Indian Army responds befittingly to violation of ceasefire by Pakistan in Naugam and Krishna Ghati sector. Pakistan claims that 3 of its soldiers were killed in the exchange, summons Indian Deputy High Commissioner. Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa meets Prime Minister Modi regarding the flood situation in the state. Estimates total loss due to floods at more than 40,000 crores. And Prime Minister Narendra Modi to leave for Bhutan, a 2-day visit tomorrow. India and Bhutan likely to strengthen bilateral ties.
The Supreme Court on Friday expressed anguish over defective petitions challenging the scrapping of provisions of Article 370 of the Constitution. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi said that the petition by Advocate M.L. Sharma challenging the scrapping of Article 370 has no meaning. Judges said that petitioner is not praying for setting aside the presidential order. It is not clear what the prayer is, and added that there were 5 other petitions in the registry which are defective. Chief Justice of India said he spent 30 minutes reading the petition on Article 370 but could not make out anything. The Apex Court asked lawyers to cure defects in their 6 petitions on Article 370 and adjourned the hearing. The bench also noted that it was hearing the petition on Article 370 by breaking the combination of judges hearing the sensitive Ayodhya matter. The Supreme Court also said that it will wait for some time before passing any direction on the plea seeking removal of restrictions on the media in Jammu and Kashmir after the centre said curbs are being lifted gradually. During the hearing, the centre told the Apex Court that the situation is improving in Jammu and Kashmir and the curbs are being lifted. Solicitor General Tushar Mehta said that government is doing review on day-to-day basis. And my colleague Vikas Sarthi is joining us from the Supreme Court with more updates on this story. Vikas, give us the details of what happened in the Supreme Court and what is it that the petitioners are seeking? Well, Shubhendu, first of all, the Supreme Court said that we were hearing the Ayodhya issue, and because that was a constitution bench, and we have to form a special bench to hear these petitions, and court was very angry because most of these petitions were either in wrong format or there was some kind of technical glitches in all those 6 petitions. Out of that, only 2 petitioners care to cure the defects in their petition. The court said that we had set up this special bench for this hearing. It's a sensitive issue, and despite that, there are still 4 petitions where are some kind of defects still in those petitions, and that needs to be cured. Court could not hear this matter on the merits and just adjourn the hearing for a next date. Though court has not decided when it will take up this matter again. But today, court was very clear that there was no seriousness on the part of petitioners who have approached the Supreme Court last week, and one of the petitioners cured defects in his petition only on Wednesday. Yesterday was a holiday, so registry was not informed that those defects have been cured, and because of all these, the court has to adjourn the hearing, and now CJI has said that he will pass an order on administrative side that when these matters should be heard again by the 3-judge bench. But so far the hearing of today is concerned, none of the petition could be heard on merits. And because given these developments, Vikas, what seems to be the road ahead in the courtroom as far as Article 370 abrogation is concerned? Well, Supreme Court will hear all these 6 petitions, and then it will decide whether it's a matter which needs judicial scrutiny or not. Because Centre has opposed all these petitions. Court said that these petitions cannot be allowed. Whatever decision has been taken by the government has been ratified by the Parliament. President has given nod to the acts, and so far as the presidential order is concerned, Centre has defended that also. Centre says that it cannot be challenged. There is no legal lacuna in that presidential order. But court will certainly hear all petitioners. Right now there are 6 petitions, and then court will decide whether this issue needs to be addressed by 3-judge bench, a constitution bench, or whether this matter needs to be judicial intervention or not. That's the basic question which Supreme Court will decide first. All right, Vikas, thanks very much for joining us with those inputs from Supreme Court. Moving on, the Indian Army has refuted the claim of Pakistani Army that 5 Indian soldiers were martyred in cross-border firing across the LOC. The Army has said that ceasefire violation by Pakistan was carried out by Pakistani forces in Nogam and Krishna Ghati sector, which was responded appropriately and befittingly. But none of our own soldiers have either got injured or have been martyred. Earlier yesterday, Pakistani Army admitted that 3 of its soldiers were killed in ceasefire violation in Poonch. The Indian Army had warned last week that Pakistani Army Twitter handles were trying to spread misinformation and falsehood in the context of Article 370 being revoked in Jammu and Kashmir.
And these were the claims, part of the Pakistan propaganda that have been made by the Pakistan Defence Forces. The army has said that they've sustained casualties on the Indian side. However, the Indian side has denied that any such development has happened. Besides, there's been a lot of propaganda on the Twitter handles of the Pakistan as well. And joining me on the phone line will be my colleague Ashok Srivastav in just a bit. But Pakistan Army has admitted that 3 of its soldiers were killed yesterday. Indian side has said that there has been no casualty on the Indian side as far as ceasefire violations are concerned. But it has also accused Pakistan of spreading propaganda in the context of the abrogation of Article 370. My colleague Ashok Srivastav is in Srinagar. He's joining us on phone line. अशोक, स्थिति का थोड़ा सा हमें अपडेट दें. अभी श्रीनगर में क्या हाल है? इंडिपेंडेंस डे की जो सेलिब्रेशंस थी बड़ी पीसफुली कंक्लूड हुई. अभी क्या स्थिति है और आगे का रास्ता क्या है श्रीनगर के लिए? देखिए शुभेंदु, बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर एक तो पहली बात यह है कि अभी जुमे की नमाज के बाद जो है अभी चारों तरफ शांति है. और बड़ी खबर यह है कि अभी 2:30 बजे यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. और 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. बड़े ऐलान का मतलब यहाँ पे जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो और फोन लाइन में कुछ जो है थोड़ी बहुत ढील दी जाए, इस तरह की लोग उम्मीद कर रहे हैं. और 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम उसमें यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है जिससे कि लोगों की जो रोजाना की जिंदगी में जो थोड़ी सी दिक्कतें रिस्ट्रिक्शन की वजह से आई हैं उन दिक्कतों को सरकार कम करने की कोशिश करेगी. शुभेंदु जी. अशोक, ऐसा भी लगता है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो तेज कर दिया है. इंडियन ऑब्जेक्शंस भी उस पर अपनी जाहिर करी हैं. क्या अपडेट आप शेयर कर सकते हैं इस पर? देखिए, इसमें तो प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान का वो हमेशा चलता रहता है, हम जानते हैं. और कल भी जब हमारे यहाँ पर राज्य सरकार के जो प्रवक्ता है उनसे बात हुई थी तो और पुलिस ने भी यही कहा था कि दरअसल प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है कि 2016 के या 2010 के जो कुछ वीडियोज हैं वो इस तरह के वीडियो जिसमें कहीं सुरक्षा बलों का लोगों से क्लैश हुआ हो, कहीं किसी घर में कोई मौत हुई हो तो उस मौत के बाद के जो दृश्य होते हैं उन दृश्य से जुड़ी जो है कुछ वीडियोस जो है फैलाई जा रही है. लेकिन वो टोटली गलत है, वो झूठी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरे वैली में जो है वो नेटवर्क नहीं चल रहा. तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि ये वीडियोस जो है यहाँ से आ कैसे सकती हैं? कोई ऐसी वीडियो है नहीं, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, शांति बरकरार है, यहाँ पर एक भी किलिंग नहीं हुई है. तो पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा शुभेंदु, इससे ये हम जानते हैं. और न सिर्फ अभी बल्कि हमें जी हेलो जी अशोक, हम सुन सकते हैं. हाँ शुभेंदु, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ अभी पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा तेज करेगा, हम जानते हैं यूएनएससी में ले जाने की कोशिश कर रहा है. और संयुक्त राष्ट्र की जो है महासभा की आम बैठक है सितंबर में, पाकिस्तान उसमें भी उठाने की कोशिश करेगा. लेकिन शुभेंदु, हम जानते हैं कि करीब करीब पिछले 50 साल से हर साल पाकिस्तान जो है ये कश्मीर का प्रोपेगेंडा करता है और कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में उठाता है. लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो असलियत है उससे वाकिफ है. इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कोशिश करेगा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आएगा. जी अशोक, यहीं पे धन्यवाद आपका इन अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए. माय कॉलीग अशोक श्रीवास्तव गिविंग अस अपडेट्स फ्रॉम Srinagar. He said that the normalcy prevails in whole of Jammu and Kashmir in particular after the peaceful celebrations of Independence Day. Importantly informed about an important press conference that is expected to take place in a short while from now by the Jammu Kashmir administration, talking about the road ahead for Kashmir in particular. Moving ahead, let's now talk about the new position of Chief of Defence Staff that Prime Minister Modi spoke about in his Independence Day speech. In a landmark military reform, Prime Minister Narendra Modi announced that the country will now have a Chief of Defence Staff, we also call it CDS, as head of the tri-services, that is Army, Navy and Air Force. It is a proposal pending since the Kargil conflict in 1999. Prime Minister said that Chief of Defence Staff will ensure synergy and provide effective leadership to the armed forces, which is the need of the hour as the country deals with evolving security challenges. Without naming Pakistan, Prime Minister also called for countries that stand for humanity to unite against forces sheltering, promoting and exporting terror. Prime Minister Narendra Modi made a key announcement for the ramparts of the Red Fort on India's 73rd Independence Day.
In a major military reform, the Prime Minister said the country will now have a Chief of Defence Staff that will ensure synergy among the three services and provide effective leadership to them. He said defence reforms are the need of the hour, as India has to keep pace with the changing world and deal with security challenges facing India. He pointed to how several experts and commissions have near consensus on the need for such reforms. आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। Welcoming the announcement, Defence Minister Rajnath Singh tweeted, "The announcement of the institution of CDS by PM Modi has been made keeping in view of the much-needed reform to streamline and further improve the coordination among the three forces and their functioning. CDS will have a long-lasting and positive impact on India's security. The CDS will be senior to the service chiefs, and his primary role will be to work towards increasing operational coordination among the Army, Navy or Air Force and deal with India's national security with a comprehensive approach. He will also act as a single-point military advisor to the Prime Minister and Defence Minister on key defence and strategic issues." A high-level committee set up to examine the gaps in the country's security system in the wake of the Kargil War in 1999 had called for the appointment of a Chief of Defence Staff. A group of ministers analysing the required reforms in the national security system had also favoured appointing a Chief of Defence Staff. In 2012, the Naresh Chandra Task Force had recommended creating the post of a permanent chairman of the Chiefs of Staff Committee. Under the present structure, the chairman of the Chiefs of Staff Committee coordinates tri-services issues. The COSC comprises the Army, Navy and Indian Air Force chiefs, and the senior-most among them acts as its chairman. Military veterans as well as strategic and defence experts hailed Prime Minister Narendra Modi's announcement of creating the post of Chief of Defence Staff, saying it was a long-pending move that will help in greater integration of the three services. It's a very welcoming steps. There has been a demand for this for last 40 years. So this decision was overdue, and I am glad this has been done today. The Prime Minister of India today, first time in history of independent India, has announced there will be a CDS. General V.P. Malik, the former chief of the army who led the force during the Kargil conflict in 1999, described it as a historic step that will ensure better jointmanship and military disciplinary coordination. While asserting that peace and security are essential to development, PM said, India won't be a mute spectator to acts of terrorism in different parts of the world. Without naming Pakistan, Prime Minister Modi said, those who support, protect and export terrorism must be exposed. कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है। श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कितनी बड़ी दर्दनाक बातें हैं, और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। The Prime Minister spoke on how his government has a clear policy on combating those creating an atmosphere of terrorism, violence and fear, and signalled that his government is going to deliver on long-pending military reforms. DD India. And my colleague and defence correspondent Nandita Dagar joins us from the newsroom with more. Nandita, Chief of Defence Staff, CDS, the term has been doing rounds for a long time, perhaps more since the Kargil conflict. What are the implications for the defence forces when this position comes into being? Yes, in
his announcement yesterday, Prime Minister Modi has taken a very bold move, and this has been pending for the past 19 years, Shubhendu, as you rightly said. After the Kargil war and the Kargil Review Committee recommended it, the group of ministers recommended it to the Cabinet Committee on Security, and in 2012, even the Naresh Chandra Committee had recommended the creation of such a post. What it would mean is that duplication of assets and resources would can be curbed now, because there would be greater integration or jointmanship between the three services, the Army, Navy and Air Force. And we currently have a system of Chairman Chiefs of Staff Committee, but that in a sense is a office that lapses with the retirement of the officer in charge. What we have, the system we have right now is the senior most service chief is the Chairman Chiefs of Staff Committee. For example, currently Air Chief Marshal B.S. Dhanoa, who is the Air Force Chief, is the Chairman Chiefs of Staff Committee, but as he retires in September this year, he would relinquish this post to General Rawat, Bipin Rawat. So he would have remained Chairman Chiefs of Staff Committee only for 4 months. CDS is would be a single point of advice and contact interface between the the Armed Forces Headquarters and the Ministry of Defence. The CDS would advise the Defence Minister and the Prime Minister. Currently, the Prime Minister is advised by the single person, that is the National Security Advisor, and the CDS is something that would replace that. There was, Shubhendu, it's a very natural question that would arise, why this has been pending for so long, for 19 years precisely, and the reason is that there was a great deal of consternation amongst the political parties, because they felt, especially the Congress party or the UPA, which believed that too much powers will be vested in the CDS. Okay. Also, the Defence Ministry bureaucrats, they felt that there would be a direct communication between the CDS or Chief of Defence Staff and the Prime Minister, and therefore they would be taken out of the loop. Right. But as you know, this model is very successful. It's working in top democracies and very, very powerful military democracies such as USA, UK, France, and even China, which has organized its military and conducted major reforms, organized it into various theatre commands. So as we see that the Prime Minister Modi has not shied away in biting the bullet in any way, not in his previous term, not in this term. He has taken pretty bold moves, be they in the sphere of military or otherwise in politics, and therefore it required a substantial amount of political will, which Prime Minister Modi has shown by announcing it yesterday from the Red Fort. All right, then, Nandita, thanks very much for joining us with those inputs. My colleague Nandita Dagar giving us a perspective of the significance of this new position of Chief of Defence Staff, and also to discuss further on the implications. Joining me in the studio, special guest Mr. Alok Bansal, security expert, also Director of India Foundation. Welcome to the studio, sir. Now, any reference to our defence forces, Army, Air Force, Navy, is always with reverence, and we hail their bravery, and it's also called one of the most professional forces. But what was this gap area which makes the position of Chief of Defence Staff a game changer? See, we need to understand that our defence forces were structured by the colonial masters, and they were configured to fight wars that existed between First World War and Second World War. Okay. And thereafter, there has not been a major restructuring of the forces. So the forces were configured to fight battles that were prevalent during the Second World War, where each service would primarily fight its own battles with a little bit of support from the other services. But the warfare has changed drastically. Today, it's going to be a short, intense war where every organ of the state will have to be involved. And consequently, for last many decades, not only after Kargil, much before Kargil, there was felt that there is a need for a Chief of Defence Staff. Okay. Unfortunately, the bureaucracy which felt that its position will get eroded if a Chief of Defence Staff comes up, the Defence Secretary's salience would reduce or things like that, has been the major stumbling block. It tried to propagate a fear psychosis amongst the politicians who did not have much experience of the defense, that having one CDS would make it too powerful and there could be coups or things like that. Okay. Not realizing that nowhere in the world a CDS has ever staged a coup. Broadly, sir, administration of the security forces now, the leadership, and how is that set to change with an introduction of the position of CDS? What kind of change can we look at? See, the CDS
by itself will firstly head the headquarter integrated defense staff, which was actually came into being after the Kargil Review Committee's recommendations. Okay. Now what it does is it coordinates the requirements between the three services, and what we need to understand is that in today's world there is always contestations by different services on limited budget, and in that sort of a scenario the CDS prioritizes what should be given to which service, what should be there, and that is what is required. Now anomaly and irony of this has been that from 2001 to 2019 we had an integrated defense staff without a CDS, so it was virtually non-functional. Right. What is even more important is that when the Kargil Review Committee gave its recommendations, there were supposed to be certain bureaucrats and other officers a part of it. There was supposed to be a foreign service officer under an HQ IDS. Okay. They have never been appointed. So the aim has been right from the beginning to ensure that this organization, this organ, this office does not fructify. And even now there are single services apprehensions because services feel their turfs would be encroached upon by CDS. There are bureaucratic apprehensions. So despite announcement, we need to move fast. We need to ensure that this organ of CDS gets full support, because the key is that he should have direct access to Prime Minister through Defence Minister and direct access to Defence Minister. Right, sir. You mentioned that this separate leadership verticals for the defence forces is a legacy of the past. Now, how has that security situation changed now? We, of course, learn about surgical strikes and other such operations. If you could broadly tell us the ways in which the defense scenario has evolved and changed now that makes a single point, single contact point for India's defenses very crucial. See, we need to understand there are three things. One, India has emerged as a great power and we have global aspirations. And in this sort of a scenario, our forces should be in a position to be deployed anywhere in the globe, not only within the India's borders. There may be India's interests which may require Indian forces to which go India in is doing nonetheless. And which we have been doing. We have been rendering humanitarian assistance after tsunami. We have been getting people of other nationalities out from conflict zones. We have been providing offshore security to countries which do not have worthwhile forces. But for better coordination, because in that sort of an operation you'll require all three services to function. Secondly, what has happened is in today's world, it is actually an equipment intensive service where no single service can fight. If an army operation has to take place, the air superiority has to be established. If an amphibious operation has to take place, the Navy, Air Force, Army all have to coordinate. So this sort of a coordination requires that the Prime Minister and the Defence Minister should be able to get a single point advice, and that should come from one individual, because till now what was happening, the bureaucrats were giving this advice who had no experience in matters defence. Right. So that was thing. And now the next step should be to create theatre commands, where I think at eastern seaboard or western front, we need to have integrated theatre commands like US has, and now most of the important countries have, and these theatre commanders should again be integrated, and they should directly report to the Defence Minister through CDS and things like that. Right, sir, and you mentioned US. If you talk about the best practices across the world, we see major defense powers, whether we talk about US, China, UK, France, they have a similar structure. So looking at their success, what are the key things that India could learn from there? I mean, these are also important motivations to step up our defense organization. See, US is the best example, because in US also we had similar bottlenecks that exist in India. The single service apprehensions that CDS will encroach on their position, and there was a lot of opposition by US Navy when US thing. But what happened in US case, and one advantage which US had probably over India was that bulk of the political leadership in US had a military background. So they understood matters military better, and it was the politicians who pushed. They brought in a Goldwater-Nichols Act which ensured that jointmanship prevailed. They ensured certain requirements for promotions and things like that, and that ensured that CDS came. And now what happens in today in US is, because US has a global presence, so they have Pacific Command, they have Atlantic Command, they have Africa Command. All these are integrated theatre commands, and they come directly under the Defence Secretary with advice from CDS and things like that. Now that sort of a scenario is what is desirable in the long term. India would need to go for it, but as of now what I feel is that the operation control will still remain with the single service, which eventually should come under the CDS. In fact, CDS should have the operational control, and each service and service chiefs must be responsible for equipping, training and manpower positioning of the service. All right.
And so, finally, if you could help us understand a technicality for now, any security concern, the advice would come from the National Security Advisor, or NSA. It seems like the CDS would have similar responsibilities. Now, do these positions coexist? Does one make the other obsolete? How does that work? See, National Security Advisor gives the security advice, and security is all-encompassing. It's a huge thing. It's actually encompasses internal security, external security. It also has a component of international relations, diplomacy, cyber security. There are various facets. Right. When we are talking of CDS, he deals with matters defense, the armed forces. And armed forces, what is their requirement, how they need to be deployed, and what are their requirements, what are their aspirations. The PM and the defense minister would now have a professional giving them a single point advice. And that's where I think the CDS is important, and how CDS structure is works out is what is important, because that will have to be worked out, how its interface with Ministry of Defense, because one of the biggest anomalies in Defense Ministry is the organization of Ministry of Defense, where you have people from every department of the government except Defense Forces. All right, sir. There, Mr. Bansal, thanks very much for joining us with those insights on the implications for Chief of Defense Staff position. And of course, Prime Minister made that announcement yesterday in his speech at the Independence Day from the Red Fort, and the ways in which it will integrate the resources and the capabilities of the three forces. Moving on, Prime Minister Narendra Modi will embark tomorrow on a two-day visit to Bhutan, during which the two strategic allies will explore ways to further strengthen and diversify the bilateral partnership. Prime Minister will launch RuPay and Bhim app during his stay for the benefit of the Indian tourists in Bhutan. PM will also interact with students of Royal University of Bhutan. Our correspondent had an exclusive interview with Indian Ambassador to Bhutan, Ruchira Kamboj. After assuming office for the second time, this would be the first visit of PM Modi to Bhutan. And to speak more on that, we have the Indian Ambassador to Bhutan, Ms. Kamboj. Let's talk to her and find out. Ma'am, welcome to DD News. In view of the neighborhood first policy, how crucial is this meet of the Prime Minister and this visit of the PM? Well, as you know, Bhutan is a very special partner of India. There is no big brother role that we play here. Everything that we do in Bhutan is per the wishes and aspirations of the people of Bhutan and as per their wishes and priorities. This cooperation has extended in diverse sectors. Of course, there are regular political visits. There is economic cooperation. There is hydropower cooperation that you know. And today the relationship is expanding into new frontiers such as space science and technology, STEM education, also in the financial sector. As you know, that we are looking into the launching of the RuPay card during the Prime Minister's visit, and also we will be working towards the launch of the Bhim app at a later stage here in Bhutan. Coming to the financial sector, RuPay and Bhim app would play a crucial role in the digital economy of Bhutan, because we have a lot of people from India traveling to Bhutan as well. So I think that will greatly benefit the Indian tourists, because as you know, we are moving from a cash to a card economy, and actually from a card to a cardless economy. So that will obviate the need for the Indian tourists to carry cash, and I think will greatly facilitate convenience. As far as the second phase is concerned of the RuPay card, which I think we should see next year, the banks of Bhutan will issue RuPay cards, which will facilitate the visit of Bhutanese tourists to India, as also the many Bhutanese students who study in India. So I think this is a very important step towards cross-border interoperability. India has already been playing a crucial role in the road development of this country. Now we have a direct access from India to Thimphu, and also the hydroelectric projects. So tell us more about that. India has been playing a large role, not since today, but since the very beginning. So as you know, we have Project Dantak here in Bhutan, and they have played a crucial role in the socio-economic development of the country, as you say. Currently, they are maintaining about 630 kilometers of road, and this is a brand that is well known and well liked across Bhutan. As far as hydroelectric power cooperation is concerned, I think there too India has played a big role. In fact, during the Prime Minister's visit, we will be launching a stamp marking 50 years of hydropower cooperation between India and Bhutan, beginning from Chukka, Tala, Kurichu, and now Mangdechu, and going forward, looking forward to the Sankosh hydroelectric power project.
And when we talk about the two countries, Prime Minister has been talking about the younger generation, and this time he would also be interacting with the students of Royal Bhutan University. So how interesting would that be? Well, I think that is, if I may say so, one of the high points of the visit. There is great excitement and enthusiasm in Bhutan, and the Royal University, which is the only university of Bhutan, has, I think, put together and crafted this program with a lot of love and care, and it is matter of great pride that Prime Minister will be addressing the youth, because when you talk of India-Bhutan relations, you must also look at the future, and the youth are the future of the India-Bhutan relationship. So I think this address is much anticipated and one of the highlights of the program. So there you heard the ambassador. She says that it is going to be a very crucial and important meeting between the two prime ministers and also between the two countries, and the audience with the king would be playing the key role in this visit of the Indian Prime Minister. And my colleague Vishal Baristo is joining us from Thimphu, Bhutan. Vishal, now neighborhood first, Prime Minister Narendra Modi has said it time and again. It's not just a vision but an action agenda. How is that going to be taken forward in the midst of the bilateral and strategic ties between India and Bhutan? Well, a very good afternoon to you, Shubhendu. As I was expecting you to talk to me, showers of blessings are here, and we can see rains in fact welcoming the Prime Minister. And let me tell you that Prime Minister has always attached a lot of importance to Bhutan, because according to his neighborhood first policy, the External Affairs Minister was the first to visit the country, and now followed by the Prime Minister. So it's going to be a very, very crucial two-day visit. And India has played a major role in the development of this country, which is known for its happiness around the world. And along with happiness is the development, which is very crucial. Infrastructure, hydroelectricity, and also the Prime Minister's vision of a common satellite for Southern Asia nations, and that would also be realized in this visit, because he would also be inaugurating the satellite ground station. So it's going to be an interesting visit, and from the king to the commoner, Prime Minister would be meeting all. He would be going to the palace, and along with that he would also be interacting with the students of the Royal Bhutan University, and that would be quite an interesting pack as far as this visit is concerned. And I've been meeting a lot of people, especially the youngsters, and they are all very excited. You just heard the ambassador how important this visit is, and apart from the 10 MOUs, the Prime Minister would also be inaugurating 5 projects. Okay. So indeed it is going to be very, very important and exciting for both the countries. Vishal, now since you're in Thimphu and you've been interacting with locals there, give us a picture of how do they look at India as a development partner? Well, when we talk about India, it is the Prime Minister who represents the country, and now he's a global figure. He's got his own charisma. And when I spoke to the youngsters, they are all happy to receive him, to host him, and they are all very excited because they've heard many good things about him. And across the streets, I've spoken to people across ages, and they are saying that he is a man who walks his words, and he is a good statesman. And India has always been very supportive of Bhutan, but ever since Prime Minister Narendra Modi took over in 2014, and now this is his second term, and after assuming office, this is his first visit to Bhutan. So they are all very happy to receive him, and they can see India developing very fast and progressing in the right direction, in the direction of new India. That is the vision of the Prime Minister, and so they are all hoping that it is going to be a new era of India and Bhutan friendship. All right, Vishal, then enjoy the rains, and thanks very much for joining us with those inputs from Thimphu, Bhutan. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation from the ramparts of Red Fort yesterday on the occasion of Independence Day. He counted many milestones and also raised several issues and challenges that lie ahead for the nation. One of them, the rapidly increasing population in the country. At the current rate, India will become the most populous country in the world by next decade, putting severe pressure on families and the nation's resources as a whole. Here's more on that. Prime Minister Narendra Modi laid great emphasis over the issue of population control in his Independence Day speech. Prime Minister said rapidly increasing population poses new challenges for us and future generations. Good family planning is a sign of patriotism. Parents must consider if they can fulfill the needs of child. We need to worry about population explosion. Governments have to come forward through different schemes. If population is not educated, not healthy, then neither home nor the country can be happy. एक विषय है
जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो न वो घर भी सुखी होता है, न वो देश भी सुखी होता है। Let us understand India's population challenge by means of data. At current rate, India is set to become the most populous nation in 2027, surpassing China. India's population has been growing at a much faster rate than China's, with the poorer regions contributing the most to that growth. India's population ballooned from 555.2 million in 1970 to 1.366 billion now, a 146% expansion. China's population grew at about half that pace, 73%, from 827.6 million to 1.43 billion. India's fertility rate is currently at about 2.24, with wide variation across states. It stands at 1.6 in Tamil Nadu and West Bengal, and 3.3 in Bihar and 3.1 in Uttar Pradesh. The fertility rate in the rural areas is much higher than in the urban areas. India's growing population poses more challenges than opportunities. Need for higher investment in education and healthcare system. Need for more food, more housing, sharp increase in drinking water supply, pressure on infrastructure such as roads, transport, electricity and sewage. More candidates for fewer jobs. Nation will need to raise resources through taxation and other means. Impact on nation's forest and water resources. Therefore, population control continues to be a major challenge for India, and the need for decisive steps to manage this explosion is higher than ever before. Bureau Report, TD News. Some other news now. On the first death anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Shraddhanjali and Sarvadharma Prarthana Sabha was held in his memory at Sadaiv Atal Memorial in New Delhi. President Ram Nath Kovind and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to Atalji. Union Home Minister Amit Shah, BJP National Working President JP Nada and other leaders of the party also paid tribute to former Prime Minister. Late Atal Bihari Vajpayee's daughter Namita Kaul Bhattacharya and granddaughter Niharika paid tribute at Sadaiv Atal. Atal Bihari Vajpayee was the 10th Prime Minister of India and was Member of Parliament for 4 decades. He was one of the main founders of Janasangh. Atal Bihari Vajpayee was also the first Prime Minister of NDA government to complete 5-year non-Congress Prime Minister's office without any obstacle. In response to Prime Minister's call to make India free of single-use plastics, a massive public campaign will be launched, engaging all stakeholders. Minister for Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar, will review all the initiatives and campaigns in this regard and chalk out a concrete plan to realize the target. The minister was addressing a gathering to celebrate 73rd Independence Day in Sao Paulo, Brazil. Union Defence Minister Rajnath Singh attended the closing ceremony of International Army Scout Masters competition in Jaisalmer. The Indian Army backed first position in the tournament despite participating for the first time. In his address to the Army Scouts, Union Defence Minister encouraged organising such events. He said that these initiatives and activities promote international relations as well. Let's get some update on the flood situation across the country. The flood situation has subsided in parts of Kerala as no red or orange alert for any district remains in force. People are returning to their homes as the situation has normalized with abatement of rains. Sun brought respite to flood-hit Kerala since Thursday as the water receded in many low-lying areas and the state began to return to normalcy.
even as the toll in the second spell of the southwest monsoon rose to 104 with 36 missing. There was no red alert warning in any of the 14 districts of the southern state as the intensity of rains decreased. And the monsoon through remains active with a well-marked low-pressure area lying embedded in the northeast Rajasthan, adjoining areas of northwest Madhya Pradesh and southwest Uttar Pradesh. The well-marked low-pressure area is very likely to move gradually along the monsoon trough and weaken after 48 hours. Widespread rainfall with isolated heavy to very heavy and extremely heavy falls are very likely over Rajasthan during the next 48 hours. A constructive interaction between monsoon low and an approaching western disturbance is likely to cause fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy to very heavy falls over western Himalayan region, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi and West Uttar Pradesh, mainly during 17th, 18th August. Enhanced rainfall activity with isolated heavy to very heavy rains likely over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim and Assam along with Meghalaya during the next 2 to 3 days. In the next segment, let's find out what's making news across the globe. First up, news from Hong Kong. Hong Kong police affirms that 748 people have been arrested since the large-scale anti-extradition bill protests that erupted on June 9th, with 115 people prosecuted. Police officials also added that 15 police officers have sustained varying degrees of eye injuries due to protesters' use of handle laser light. Police tactics are toughening after 10 weeks of increasingly violent confrontations between police and the protesters plunged Hong Kong. In a new major development in the contentious trade war between US and China, China has vowed to counter the latest tariffs imposed by the United States on $300 billion of Chinese goods. Both the parts are set to hold trade negotiation meetings in Washington in September. US President Donald Trump expressed on Thursday that the trade war between the both nations would last soon, and he said that China wants to make a trade deal. Time now for all the action from the world of sports. My colleague Taposh Bhattacharya is all set. Taposh, what's the latest? The latest is the coach saga that is going to unfold by today evening. The three-member Cricket Advisory Committee comprising of Kapil Dev, Anshuman Gaikwad and Shanta Rangaswamy will announce the head coach today evening at 7 p.m. when it will address the media. The Kapil Dev-led CAC started the interview process for the selection of India's head coach at the BCCI headquarters. A total of 6 shortlisted candidates, Ravi Shastri, Tom Moody, Phil Simmons, Mike Hesson, Lalchand Rajput and Robin Singh will be interviewed throughout the day. The incumbent head coach Ravi Shastri and Simmons will join the interview via Skype from West Indies, while the other 3 candidates, Hesson, Rajput and Singh, were present in person to give their presentation. Meanwhile, England's fragile batting again buckled on day 2 of the second Ashes test against Australia at Lord's. Opener Rory Burns made a battling 53 only to be part of a collapse of 4 wickets for 46 runs that left the home side 138 for 6. England partially recovered through a stand of 72 between Johnny Bairstow and Chris Woakes. Bairstow was also helped by cameos from debutant Jofra Archer and Stuart Broad before becoming the last man to fall for 52 to leave England 258 all out. Australia lost David Warner, bowled by Broad, to close on 30 for 1, but will be the happier side after captain Tim Paine won the toss. Well, from cricket to tennis, Nick Kyrgios's feud with umpire Fergus Murphy boiled over during the explosive outing at the Cincinnati Masters that left the Australian player 13,766 pounds lighter in the pocket and facing a possible suspension from the ATP. Let's take a look. Well, that's all from the Sports Prime. Shubhendu, for more news and updates, back to you. All right, Taposh, thanks very much for joining us with those inputs. Let's now find out what's making news in Live Prime.
Around 1,500 twins and triplets of all ages gathered in Brittany, France, to celebrate the Twin Festival. Northwestern side of the country, the festival, which hosts twins from France and other countries, is a major hit and has been a trend since 1994. Famous for its summer gathering, the festival allows twins to meet other twins. This year celebrates the 25th year of the celebration. And with that, we conclude this edition of Midday Prime. News and updates continue after a short break. Namaskar. हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो। मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी, आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। जम्मू कश्मीर के हालात की पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से डीडी न्यूज दे रहा है हर खबर। धारा 370-35A हटने के बाद कश्मीर और खूबसूरत जगह हो गई है। बेहद अहम कदम माना जा रहा है। आतंकवाद पर लगाम को देखकर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर डीडी न्यूज के रिपोर्टर। आम नागरिक जो है वो काफी उत्साहित है। इसको कहीं न कहीं ये लगता था कि विकास की मुख्य धारा में वो पीछे छूट रहे हैं। इस वक्त हम लद्दाख के लेह में मौजूद हैं। लोग काफी उत्साहित हैं। जानिए लोगों का हाल और जमीनी हकीकत। भारतवासियों की जीत हुई है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है यहाँ। काफी लोगों को रोजगार बढ़ेगा। मस्जिद तो हम गए सुबह, मस्जिद के नमाज अदा की। विशेषज्ञों के साथ हर पहलू की समीक्षा। देखिए लगातार कवरेज डीडी न्यूज पर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन अब लाए हैं डीडी साइंस, 1 घंटा विज्ञान के नाम। हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक एक नए युग की शुरुआत। डीडी साइंस, हम देंगे हर सवाल का जवाब। जी हां, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, भारत सरकार का एक नायाब कदम। दिन भर की सुर्खियों पर नजर, देश दुनिया की 100 बड़ी खबर सिर्फ 30 मिनट में। एक्सप्रेस न्यूज, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। A quick look at the day's top news.
100 big stories from across the country and the world in just 30 minutes. Watch Express News Monday to Friday, 7 p.m. only on DD India. जल है तो कल है। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना हो, पानी बचाना है, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को उच्चतम न्यायालय की कड़ी फटकार। कहा याचिका की खामियां करें दूर। 3 जजों की खंडपीठ ने बिना आदेश सुनवाई की स्थगित। कर्नाटक में बाढ़ के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बाढ़ से राज्य में 40,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान। केरल में बाढ़ की स्थिति में सुधार। किसी भी जिले के लिए नहीं जारी किया गया कोई अलर्ट। सामान्य होते हालात के बीच अपने घरों को लौट रहे हैं लोग। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा नौगांव और कृष्णा घाटी सेक्टर में किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन का दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने गोलीबारी में अपने 3 जवानों के मारे जाने का किया दावा। भारतीय उप उच्चायुक्त को किया गया तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों को मिलेगी और मजबूती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं ममता चोपड़ा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर वकील एमएल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्स्चर नहीं लगाया गया। मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा। आपकी प्रेयर क्या है, कुछ पता नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके। हम आपकी याचिका को खारिज कर देते, लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को कम किए जाने पर 6 याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से 4 अभी भी दोषपूर्ण हैं और इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में डिफेक्ट दूर होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
और फिलहाल आपको सीधे ले चल रहे हैं श्रीनगर, जहां पर श्रीनगर के मुख्य सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। Good afternoon, friends. I'm here to make a statement on the developments of the last few days, the situation in the state right now, on what we plan to do over the coming few days. Okay. Okay, fine. I intend to make a statement which I will read out, copies of which will be circulated later, and I don't intend to take any questions barring one or two. The statement answers most questions that you're likely to have. A fortnight ago, some major decisions were taken with a view to promoting the long-term welfare of the people of all the regions of the state and to ensure better governance and accelerated development. The government's approach was guided by the conviction that all-round development was the most credible solution to address separatist sentiments that were propagated by vested interests. Such sentiments were being used to legitimize a policy of cross-border terrorism that has cost the lives of thousands of inhabitants of the state and the country. The intent of terrorist attacks was to create an atmosphere of fear and terror and to block development that could unleash opportunities for the younger generation of people in the state. Among the groups that are well known for sponsoring violence and carrying out such attacks are Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, etc. Their record has been recognized by governments worldwide and by international organizations, including the United Nations. In implementing the decisions taken last fortnight, this history of cross-border terrorism required the government to put in place certain preventive steps as a precautionary measure. An important factor in doing so were credible inputs that such terrorist organizations were planning to undertake strikes in the state in the immediate future. The steps consequently taken included restrictions on free movement, prevention of large gatherings, restrictions on telecom connectivity, and closure of schools and colleges. A few preventive detentions of individuals were also made in accordance with the provision of law to maintain law and order and avoid breach of peace. Similar measures have had to be taken in the past also following violent incidents. This time, these measures have been taken by way of precaution only, keeping the safety and well-being of public at large. At the same time, steps were taken that there was no shortage of essential supplies. Medical facilities and hospitals continued to function. Electricity, water supply, and sanitation services are maintained. Pilgrims going on Hajj and returning from Hajj were specifically facilitated, and people associated with providing all these services have free movement. Periodically, there were relaxations in some of these restrictions to enable people to come out for their daily requirements. A media center has been opened with communication facilities to enable media to cover events in the state, with regular press briefings by senior government officials, including the Principal Secretary who is sitting next to me and the Director Information sitting next to me. Sufficient number of passes have been issued to media persons to facilitate their movement and reporting by them. All major networks, satellite and cable TV networks are operational and newspapers are being published. There have been prolonged relaxations in the restrictions on Saturday
and Sunday, that is the 10th and 11th of August, prior to Eid, so that people could do their Eid shopping. Relaxations were also given on the day of Eid to enable people to perform their Eid prayers, which was done in large numbers throughout the state. There were provisions to enable people to go around and meet their friends and relatives and exchange Eid gifts. However, some restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally, with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. Keeping in view the evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. After today's Friday prayers, which the immediate reports have gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. Telecom connectivity, which has been a point of sore concern, will gradually be eased and restored in a phased manner, keeping in mind the constant threat posed by terrorist organizations in using mobile connectivity to organize terror actions. Preventive detentions are being continuously reviewed, and appropriate decisions will be made based on law and order assessments. It is expected that over the next few days, as the restrictions get eased, life in Jammu and Kashmir will become completely normal. This is already visible on the roads to most of you, as the roads are full of regular traffic, and we expect to see it increase in the coming few days. The government appreciates that it is the cooperation of the people of Jammu and Kashmir that is critical to help maintaining peace and public order. Its focus is on the earliest return to normalcy, while ensuring that terrorist forces are given no opportunity to wreak havoc as in the past. Thank you. What? These have been extraordinary restrictions over the last 10-12 days. But does the government have an assessment? You talked about terrorist threats and stuff. But does the government have an assessment about how the people of the state have taken the decision of reorganizing the state as well? Because there is a lot of unhappiness. I am not getting into that right now. We are actually talking about the restrictions that have been placed and the gradual unrolling of those restrictions. As things come back to normalcy, all of you will have a better assessment. What you are telling me is anecdotal in nature. So whatever one is hearing is anecdotal. When things come back to full normalcy, one will have a better idea. 1 second. Yep, go ahead. You suggested that there are elements across the border which are trying to fan trouble in Kashmir. Right. And certain militant groups on this side, like Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba. So how do you categorize PDP and NC, whose leaders are behind the bars? Are they also getting directions from any side? I have named certain organizations. Our primary responsibility is to ensure that there is no loss of life. Most of you have seen the events of 2008, 10 and 16.
what happened then and what has happened now. There has been not a single loss of life, and it is to the credit of the people of the state and the government and the security forces that they have managed to get over the situation very quietly with utmost calm and no loss of civilian life. What is being propagated from across the border is apparent to all, and there is certainly an attempt to ensure that peace and calm in the state are disturbed. The people of the state have been the biggest victims of all this, and my statement actually says everything. Okay, since you asked me about telephone lines, you will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. I'll stop it. Please, that's it. Thank you. तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम इस वक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और इसमें वो श्रीनगर के ऊपर में जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 370 के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के बाद पिछले 2 हफ्तों में जो हालात रहे उनके बारे में तमाम जानकारी दे रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि इन पूरे हालात में अभी तक किसी भी व्यक्ति की मौत भी नहीं हुई है और किसी भी सिविलियन को गंभीर रूप से कोई भी इंजरी भी नहीं हुई है। उन्होंने जोर देकर ये बात कही कि सीमा पार से दुष्प्रचार की कोशिश की जा रही है और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है पिछले 2 हफ्तों में। उन्होंने साथ ही ये उम्मीद जरूर जताई कि आज रात और कल सुबह से संचार सुविधाओं में भी पाबंदियां जो लगी हैं उनमें भी ढील दी जाएगी और खासतौर पर जो लैंडलाइंस हैं, जो फोन लाइंस हैं, वो भी काफ़ी हद तक सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इस वीकेंड के बाद यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद अगले सप्ताह से स्कूल खुलने की भी उन्होंने बात कही और ये इस बात उन्होंने जोर देकर ये बात भी सामने कही कि लोगों के सहयोग की वजह से हालात सामान्य होने में भी सफल हो पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो हालात सामान्य रहे हैं वो लोगों का सहयोग उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त हमारे संवाददाता रमा त्यागी सीधा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा, मुख्य सचिव ने जो महत्वपूर्ण बातें सामने रखी उसमें उन्होंने ये बात पर भी जोर दिया कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं पिछले 2 हफ्तों में उन सुविधाओं में कोई कमी नहीं रही, लेकिन एक बड़ा संदेश कि आज के बाद और जो पाबंदियां लगी हुई हैं जिनको एहतियात के तौर पर लगाया गया है क्योंकि सीमा पार से आतंकी हमले की धमकियां थी और खतरा था, तो उसमें ढील दी जा सकेगी। एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, श्रीनगर के लिए। बिल्कुल, बेहद अच्छी खबर, बेहद सुखद खबर ममता, और सुबह से हम इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। जो ऑफिशियल सोर्सेज से पहले हमें जानकारी मिली थी और उसकी पुष्टि अब मुख्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह के थ्रेट थे, उसको देखकर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, लेकिन बावजूद उसके जो सामान्य कार्य व्यवहार था वो जारी था। लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज थी, चाहे वो चिकित्सा की बात हो चाहे और जरूरियात, वो खुली हुई थी। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन की बात थी उसमें भी विभिन्न उपाय किए गए थे जिससे कि जो कम्युनिकेशन है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बाधित ना हो। और अब जो सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जैसे जैसे सिचुएशन और उनको लगेगा कि अब जो रिस्ट्रिक्शन उठाने लायक है तो फेजेस में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उठाई जाएंगी। और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वीकेंड के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे। इसके साथ ही साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो थोड़ी फेज बाय फेज वो भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। और सुबह के आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि आज रात के बाद सुबह से ही इसका एहसास लोगों को होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने धन्यवाद दिया यहाँ के लोगों का भी, सुरक्षा बलों का भी और स्टेट प्रशासन का भी, जिस तरह से उन्होंने पूरी स्थिति को मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ममता, रमा, एक बात जो उन्होंने कही वो ये भी कि जब उन्होंने कहा कि स्कूल खोले जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि एरिया बाय एरिया, क्षेत्रवार ढंग से ये काम होगा। तो क्या ये माने कि सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अलग अलग जिलों में ये निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं? बिल्कुल, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एरिया बाय एरिया देखा जाएगा कि किस तरह से वहां पर स्थिति है और उसी के हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि कई जगह है जो बेहद संवेदनशील है और कई जगह है कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। तो जिस भी तरह की स्थिति होगी उसी के अनुसार से, लेकिन स्कूल कॉलेजेस जो है वो मंडे से खुल जाएंगे। और उसके बाद जो ये कम्युनिकेशन के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी धीरे धीरे खुलेगा और जो लोग हैं वो और ज्यादा राहत महसूस कर सकेंगे। ममता,
रमा, आम तौर पर घाटी के बाहर या जम्मू कश्मीर के बाहर जो लोग हैं वो कुछ ऐसी खबरों पर भी विश्वास करने लगे हैं जो बाहर के मीडिया से आ रही हैं, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य रखे जा रहे हैं जो सही नहीं हैं। आज मुख्य सचिव ने ऐसे कुछ बातों को भी स्पष्ट किया, खास तौर पर जब उन्होंने इस बारे में भी संकेत दिया कि सीमा पार से जो दुष्प्रचार की कोशिश की जा रही है उस पर विश्वास ना करें। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा, और ये लगातार प्रशासन ये कहता आ रहा है कि जिस तरह से कुछ खबरें आई थी या जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पुराने वीडियोज आए थे, 2016 के वीडियोज आए थे या उससे भी पुराने वीडियोज आए थे, जो यहाँ पर स्थिति एक नॉर्मल हो रही है, उस स्थिति को बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही थी, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि स्थिति ठीक नहीं है, जबकि ये बिल्कुल भ्रामक था, गलत था। उसे ही मेंटेन करने के लिए, उसे ही उस पर ही लगाम लगाने के लिए तमाम उपाय किए गए थे। और 8 ट्विटर हैंडल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा और भी सोर्सेज इस तरह से देखे गए जहां से भ्रामक खबरों का प्रचार हो रहा था और यहाँ से सही खबरें जाएं, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेहद लिमिटेड था और इसीलिए यहाँ पर मीडिया सेंटर खोला गया था और इंटरनेट की फैसिलिटी और मोबाइल फोन जो है मीडिया कर्मियों को दिए गए थे, अवेलेबल कराए जा रहे थे। तो तमाम प्रयास प्रशासन की तरफ से किए थे कि जो भी भ्रामक प्रचार असामाजिक तत्वों के द्वारा या फिर आतंकवादियों के द्वारा या फिर ऐसे लोगों के द्वारा जो कि यहाँ पर अस्थिरता या अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, उनके प्रयास सफल ना हो पाए। और इसमें प्रशासन पूरी तरह से सफल रहा है। इतने दिनों में आपने ममता देखा होगा कि सामान्य कार्य व्यवहार रिप्रेशन के बावजूद ठीक चला है और किसी भी तरह की किसी अवांछनीय घटना की कोई सूचना नहीं आई। जी बिल्कुल रमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रमा, हम चाहेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आज जो प्रेस वार्ता हुई है हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने आज प्रेस वार्ता की अब से कुछ ही देर पहले, और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने पिछले 2 हफ्तों के बीच जो हालात रहे उनका भी जिक्र किया और साथ ही साथ आने वाले वक्त में क्या कुछ सुधार हो सकता है, क्या कुछ ढील पाबंदियों में दी जा सकती है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। रमा, आप लगातार हमें बता रही हैं कि किस तरीके से क्या क्या अहम बिंदुओं को मुख्य सचिव ने अपनी प्रेस वार्ता में छुआ। एक बात जो कई बार कही जाती रही वो ये कि मीडिया को वो ढील नहीं दी जा रही या मीडिया को सच्चाई दिखाई नहीं देने जा रही, लेकिन जिस तरीके से मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मीडिया को पासेस भी बड़ी मात्रा में दिए गए हैं, मीडिया को मीडिया सेंटर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, ये स्पष्ट दिखाता है कि मीडिया को वो आजादी है कि जो जमीनी सच्चाई है जम्मू कश्मीर की वो सामने रखे। और आपका क्या अनुभव कहता है रमा, क्योंकि आप भी वहां पे पिछले कुछ दिनों से हैं? देखिए, मीडिया को पूरी तरह से यहाँ पर फ्रीडम से रिपोर्ट करने के लिए मीडिया अलग अलग प्रोसेस पे यहाँ पर जा भी रहा था और विभिन्न तरह के पासेस भी मीडिया को अवेलेबल कराए गए थे जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर जा भी रही थी। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थी, कुछ अवांछनीय तत्व ऐसे थे जो ये चाहते थे कि इस तरह की चीजें जो है बाहर ना जाए और पिक्चर को बिगाड़ के दिखाया जाए और इसी वजह से ये भ्रामक खबरें आई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन के सुदृढ़ इंतजाम रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर मीडिया की रिपोर्टिंग रही है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, उसको देखते हुए स्थिति जो है वो सामान्य से सामान्यता होती गई यहाँ पर। रमा, जब भी ऐसी कोई पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उसके पीछे की सोच को स्पष्ट तौर पर सामने रखना बेहद जरूरी होता है। मुख्य सचिव ने इस बात को कई बार सामने रखा कि एहतियात के तौर पर ये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, आतंकी खतरे के मद्देनजर ये पाबंदियां लगाई गई हैं, सीमा पार से जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसके मद्देनजर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या ये संदेश आगे तक पहुंच पाया है? बिल्कुल, ये संदेश साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी बात से पहुंच पाया है कि जिस तरह से यहाँ पर निर्देश जारी किए गए थे, यहाँ पर लोगों ने शांतिपूर्वक इसका पालन किया और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति लगातार रही है कि पाकिस्तान जो है बॉर्डर पर या LOC पर परेशानी क्रिएट करता है, वहां पर टेंशन रखना चाहता है और उसकी आड़ में वो यहाँ पर ध्यान बटाकर जो अंदर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है, उसे नाकाम करना एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत बहुत जरूरी था। और जिस तरह से महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर लिया गया था, उसके बारे में जो भ्रामक दुष्प्रचार था वो लगातार यहाँ पर फैलाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन आप जो एजेंसीज हैं उनका कोऑर्डिनेशन देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना सुदृढ़ था कि जो ईद का त्योहार था वो भी यहाँ पर शांतिपूर्वक मनाया गया। इसके साथ ही जो स्वतंत्रता दिवस है, आप देख सकते हैं न केवल घाटी में बल्कि जो देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने भी यहाँ पर मनाया। तो तमाम
प्रशासन, तमाम एजेंसियां, उनका जो एक सुदृढ़ नेटवर्क था उसको देखते हुए ये जो व्यवस्था है ये कायम करने में यहाँ पर सफल प्रशासन हो पाया है। और आप देख रही हैं कि लगातार जो रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियां सड़कों पर थी, लोग अपना कामकाज कर रहे थे। रमा, मैं चाहूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि संचार सुविधाओं को जो आने वाले वक्त में बहाल की जा सकती हैं, उनको लेकर मुख्य सचिव ने अपनी इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। You will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. तो मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि धीरे धीरे संचार सुविधाओं को सामान्य किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि बीएसएनएल को वापस से काम करने में कुछ घंटों का समय लगता है और हर एक्सचेंज को सक्रिय करना पड़ता है, इस वजह से उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ज्यादा संचार सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। रमा, आप बनी हुई है श्रीनगर से सीधा हमारे साथ। जब पाबंदियों की बात होती रही है रमा, तो उसमें सबसे बड़ी जो आवाज उठाई जाती है, रमा आपको हमारी आवाज आ रही है? जी ममता बताएं। हाँ रमा, जब भी बात हुई है पाबंदियों की, तब लगातार एक बात जो सामने आती रही वो ये कि संचार सुविधाएं सामान्य होनी जरूरी है, ताकि जो लोग हैं वो अपने प्रियजनों से बात कर सके, जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर मौजूद अपने परिवार के लोगों से बात कर सके, इसलिए संचार पर बहुत जोर दिया जाता रहा। अब आज जबकि मुख्य सचिव ने कहा है कि जल्द ही संचार सुविधाओं को सामान्य किया जा रहा है, कितनी बड़ी अच्छी खबर मानी जा सकती है घाटी के लोगों से, क्योंकि आप भी तो घाटी के लोगों से लगातार बातचीत करती आ रही हैं और आपको भी इस बात का अंदेशा होगा कि वो इस चीज को कितने महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल बेहद राहत की बात है यहाँ पर लोगों के लिए, क्योंकि जो संचार सुविधाओं को जो विभिन्न वजहें मुख्य सचिव ने जिस तरह से बताई, चाहे वो आतंकवादी खतरा हो, चाहे असामाजिक तत्वों की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करना हो, उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उसको लेकर परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे वो बाहर पढ़ते थे। इसके अलावा ईद का त्योहार भी आने वाला था। इसके अलावा जो क्योंकि फोन लाइन बंद होने से जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल कट गया था, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन ने 300 से ज्यादा जो फोन बूथ यहाँ पर लगाए थे। इसके अलावा विभिन्न ऑफिस में जो लोगों को सुविधाएं दी गई थी, जो विभिन्न सुरक्षा दल हैं उन्होंने मददगार केंद्र अपने लगाए हुए थे जो लोगों को बात करा रहे थे। तो दिक्कत जरूर थी, लेकिन उसका भी एक उपाय निकाला गया था। और अब जबकि ये संचार सुविधाएं बहाल होने की बात हुई है तो बेहद राहत की खबर है। और जिस तरह से मुख्य सचिव ने भी इस बात को साफ किया कि कल से ही इसका असर दिखाई देगा और विभिन्न इलाकों में वहां के हालात के मुताबिक ये जो सुविधाएं हैं ये बहाल कर दी जाएंगी, तो बेहद राहत की खबर है। चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे स्कूल और कॉलेजेस के खुलने की बात हो, चाहे जिस तरह से उन्होंने बताया कि स्थिति पर नियंत्रण है, चाहे बॉर्डर हो, चाहे आंतरिक स्थिति हो, काफी जो कोशिशें उनको नाकाम किया गया है, या फिर जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था उस पर लगाम लगाया गया है, तो बेहद राहत की खबर है ममता। एक बात, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने ये बात कही थी कि अनुच्छेद 370 के संदर्भ में जो केंद्र ने निर्णय लिया है उसका कितना वो सही निर्णय है और उसका कितना अच्छा फायदा हो सकता है जम्मू कश्मीर की आवाम को, इसके बारे में जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी और आने वाले वक्त में इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। रमा, अभी हमने देखा कि मुख्य सचिव ने कहा कि केबल और केबल जो सेवा है वो भी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो समाचार पत्र हैं वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। क्या अब ये सारी जानकारी इन जरियों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, जो संचार के सभी माध्यम हैं उनके खुलने से ये सारी की सारी जो जानकारी है, जो लोगों के मन में कुछ संशय पैदा करने की कोशिश की गई या जो पुराने कंफ्यूजन्स हैं उनको निकालने में बहुत ही सहायक साबित होगी ममता। जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर अपना संबोधन किया, राज्यपाल ने जो अभी अपना संबोधन दिया, इसके अलावा राज्यपाल ने स्वयं दौरा किया, एनएसए ने यहाँ पर लगातार सुरक्षा स्थिति के साथ साथ विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों से बात की, उनसे कनेक्ट किया, उनके मन की बात जानी, उनकी बहुत सारी शंकाओं का निवारण किया। तो तमाम प्रशासनिक अमला जिस तरह से अब जमीन पर उतरा हुआ है, ये सब जो अमली जामा पहनाने के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जब संचार की सुविधाएं खुल जाती हैं तो इसमें और ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि ममता ये बताना बहुत जरूरी होगा कि धारा 370 और 35 से जिसको कि एक बड़ा मुद्दा बनाकर अभी तक उठाया जाता रहा है और जिसके आड़ में यहाँ पर लोगों को छला जाता रहा है, यहाँ के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता रहा
रहा है या उन्हें एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता रहा है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को सही जानकारी भी नहीं है कि आखिर वो है क्या, उसके जाने से उन्हें नुकसान क्या हुआ या फिर उसके ना रहने से उन्हें क्या कुछ फायदा होगा। तो ये सब बातें लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर भी रहा है। केंद्र सरकार की पूरी नजर है, केंद्र सरकार भी इसकी तरफ से लगातार, जैसे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि लाल किले से इस बात की घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हुई है, वो युग जो एक विकास का युग होगा, वो युग जो एक स्वर्णिम युग होगा, वो युग जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग जिन चीजों से वंचित थे, जिन लाभों से वंचित थे, वो लाभ उन्हें मिलेंगे। एक वो युग जिसमें बहुत सारी भ्रामक परिस्थितियां उत्पन्न की गई थी, जिसमें कि लोगों के विकास के रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, अब वो रास्ते खुलने का समय आ गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण इन सब बातों से ममता ये हो जाता है। जी रमा, तो बहुत महत्वपूर्ण रही है ये सारी जानकारी जो आज मुख्य सचिव ने दी है, जिससे कि ये उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में ये सारी जो व्यवस्था है और जो हालात हैं वो अब पूरी तरह से सामान्य हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मेरे सहयोगी शुभेंदु भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु, देखा जाए तो जो बात लगातार कही जाती रही कि जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, जो उन हालात को सामान्य करने के लिए जो पाबंदियां हैं उनमें धीरे धीरे ढील दी जानी बहुत जरूरी है। आज मुख्य सचिव की प्रेस वार्ता है, हम सबने देखी, एक उम्मीद कि अब जल्द ही, उन्होंने कहा आज रात और कल सुबह तक ही संचार सुविधाएं सामान्य हो जाएंगी, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, घाटी के लोगों को हालात सामान्य हो ही रहे हैं। Absolutely, Mamta. And one of the key points was that there was absolutely no casualty in the restrictions that were maintained for the past few days. And Chief Secretary BVR Subramaniam spoke in detail about the situation in Jammu and Kashmir, also the ways in which the restrictions are going to be relaxed phase by phase. Now we bring you that entire press conference once again. Welcome, friends. Chief Secretary Jammu and Kashmir Shri BVR Subramaniam is here, and he will address all of you. Good afternoon, friends. I'm here to make a statement on the developments of the last few days, the situation in the state right now, on what we plan to do over the coming few days. Okay. Okay. Fine. I intend to make a statement which I will read out, copies of which will be circulated later, and I don't intend to take any questions barring one or two. The statement answers most questions that you are likely to have. A fortnight ago, some major decisions were taken with a view to promoting the long-term welfare of the people of all the regions of the state and to ensure better governance and accelerated development. The government's approach was guided by the conviction that all-round development was the most credible solution to address separatist sentiments that were propagated by vested interests. Such sentiments were being used to legitimize a policy of cross-border terrorism that has cost the lives of thousands of inhabitants of the state and the country. The intent of terrorist attacks was to create an atmosphere of fear and terror and to block development that could unleash opportunities for the younger generation of people in the state. Among the groups that are well known for sponsoring violence and carrying out such attacks are Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, etc. Their record has been recognized by governments worldwide and by international organizations, including the United Nations. In implementing the decisions taken last fortnight, this history of cross-border terrorism required the government to put in place certain preventive steps as a precautionary measure. An important factor in doing so were credible inputs that such terrorist organizations were planning to undertake strikes in the state in the immediate future. The steps consequently taken included restrictions on free movement,
prevention of large gatherings, restrictions on telecom connectivity, and closure of schools and colleges. A few preventive detentions of individuals were also made in accordance with the provision of law to maintain law and order and avoid breach of peace. Similar measures have had to be taken in the past also following violent incidents. This time, these measures have been taken by way of precaution only, keeping the safety and well-being of public at large. At the same time, steps were taken that there was no shortage of essential supplies. Medical facilities and hospitals continued to function. Electricity, water supply, and sanitation services are maintained. Pilgrims going on Hajj and returning from Hajj were specifically facilitated, and people associated with providing all these services have free movement. Periodically, there were relaxations in some of these restrictions to enable people to come out for their daily requirements. A media center has been opened with communication facilities to enable media to cover events in the state, with regular press briefings by senior government officials, including the Principal Secretary who is sitting next to me and the Director Information sitting next to me. Sufficient number of passes have been issued to media persons to facilitate their movement and reporting by them. All major networks, satellite and cable TV networks are operational and newspapers are being published. There have been prolonged relaxations in the restrictions on Saturday and Sunday, that is the 10th and 11th of August, prior to Eid, so that people could do their Eid shopping. Relaxations were also given on the day of Eid to enable people to perform their Eid prayers, which was done in large numbers throughout the state. There were provisions to enable people to go around and meet their friends and relatives and exchange Eid gifts. However, some restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally, with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. Keeping in view the evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. After today's Friday prayers, which the immediate reports have gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. Telecom connectivity, which has been a point of sore concern, will gradually be eased and restored in a phased manner, keeping in mind the constant threat posed by terrorist organizations in using mobile connectivity to organize terror actions. Preventive detentions are being continuously reviewed
and appropriate decisions will be made based on law and order assessments. It is expected that over the next few days, as the restrictions get eased, life in Jammu and Kashmir will become completely normal. This is already visible on the roads to most of you, as the roads are full of regular traffic, and we expect to see it increase in the coming few days. The government appreciates that it is the cooperation of the people of Jammu and Kashmir that is critical to help maintaining peace and public order. Its focus is on the earliest return to normalcy, while ensuring that terrorist forces are given no opportunity to wreak havoc as in the past. Thank you. May I ask you questions? What? These have been extraordinary restrictions over the last 10-12 days. But does the government have an assessment? You talked about terrorist threats and stuff. But does the government have an assessment about how the people of the state have taken the decision of reorganizing the state as well? Because there is a lot of unhappiness. I am not getting into that right now. We are actually talking about the restrictions that have been placed and the gradual unrolling of those restrictions. As things come back to normalcy, all of you will have a better assessment. What you are telling me is anecdotal in nature. So whatever one is hearing is anecdotal. When things come back to full normalcy, one will have a better idea. 1 second. Yep, go ahead. You suggested that there are elements across the border which are trying to fan trouble in Kashmir. Right. And certain militant groups on this side, like Lashkar-e-Taiba. So how do you categorize PDP and NC, whose leaders are behind the bars? Are they also getting directions from any side? I have named certain organizations. Our primary responsibility is to ensure that there is no loss of life. Most of you have seen the events of 2008, 10 and 16. What happened then and what has happened now. There has been not a single loss of life, and it is to the credit of the people of the state and the government and the security forces that they have managed to get over the situation very quietly with utmost calm and no loss of civilian life. What is being propagated from across the border is apparent to all, and there is certainly an attempt to ensure that peace and calm in the state are disturbed. The people of the state have been the biggest victims of all this, and my statement actually says everything. Okay, since you asked me about telephone lines, you will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. That was an important press conference by BVR Subramaniam, Chief Secretary, Jammu and Kashmir. Importantly, his press conference focused on the manner in which the restrictions are going to be eased in the region, Jammu and Kashmir, in Kashmir in particular. He spoke about how schools will be opened area-wise from next week, from Monday. Government offices, in fact, are fully functional already from today. On the aspect of mobile connectivity also, he said that phase-wise the connectivity will be restored. There were several key highlights. We're heading for a short break here. When we return, we'll get some update from the ground in Srinagar. Stay with us. अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना. अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना. आधार अपडेट? हाँ. पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं. जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ. मेरा आधार, मेरी पहचान. So we heard the press conference by Chief Secretary BVR Subramaniam talking about the manner in which restrictions are going to be eased in the valley in Kashmir. Now my colleague Nitendra is joining us from Srinagar on a phone line. Nitendra, जब से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तभी से आशा थी कि कितनी जल्द जो नॉर्मलसी है वो वैली में, कश्मीर में, जम्मू और लद्दाख में तो चीज़ें बेटर है, पर कश्मीर में नॉर्मलसी जल्द से जल्द आए. अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ सेक्रेटरी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस ईज की जाएंगी.
देखिए, बहुत अहम घोषणा है सरकार की तरफ से, खासतौर पे बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे और वो जो एरिया वाइज एरिया वो स्कूल खोलने का प्लान है सरकार का। और उसके बाद जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं खासतौर पे, उनको स्कूल वो जा सके, पढ़ाई कर सके, इसको लेकर के सरकार ने एक अहम घोषणा की। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको ओपन किया जाए ताकि लोग एक दूसरे से दूसरे जगह तक आ सके, जा सके, अपने रिश्तेदारों से मिल सके, अपने रोजमर्रा के जो जीवन है उसको सामान्य कर सके। और तीसरी जो अहम घोषणा थी वो कनेक्टिविटी को लेकर की थी, खासतौर पे जो मोबाइल और टेलीफोन को लेकर की थी। तो उसमें भी सरकार का ये कहना है कि हम आज शाम से और कल सुबह से जो फोन लाइन है वो ओपन हो जाएंगे ताकि लोग बात कर सके, अपने परिजनों से बात कर सके और एक तरह से नॉर्मल सिचुएशन में रह सके। तो ये 3 बहुत ही अहम सरकार की तरफ से फैसले हैं जो लिए गए हैं और इसका सीधा सीधा असर यहाँ के लोगों पे पड़ेगा और लोग की जो सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। हम देखते हैं पिछले 3 दिन से भी देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो मिल रही है। खासतौर पे जो अस्पताल है उसमें ओपीडी में डॉक्टर बैठ रहे हैं, पेशेंट का इलाज हो रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं और जो दवाएं हैं, दवाएं वो भी दवाओं का बिल्कुल उपलब्धता है, जो मेडिकल स्टोर है वो खुले हुए हैं। तो आमतौर पे जो ट्रैफिक है वो सामान्य है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। डल लेक पे मैंने देखा कि लोग वहाँ पे मछलियां मार रहे हैं, लोग शिकारा में घूम रहे हैं। तो तमाम जो सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो स्कूल के लिहाज से है, जो छात्रों के लिहाज से, वो बहुत ही अहम है। जो मंडे से, सोमवार से स्कूल खुलेंगे और कुछ एरिया में और फेज मैनर में उसको खोला जाएगा। जी नितेंद्र, चीफ सेक्रेटरी ने ये भी बताया कि रिस्ट्रिक्शंस के दौरान जो अभी भी कायम है, किस तरीके से माहौल पूरा शांत रहा, कोई भी कैजुअलिटी या सीरियस इंजरी की कोई रिपोर्ट नहीं है और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, उन्होंने कहा कि बहुत क्रूशल होगा अभी जब रिस्ट्रिक्शन है और बाद में जब उसको हटाया जाएगा पूरी वादी में पीस और अमन चैन कायम रखने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सरकार की तरफ से कही गई कि जो ये रिस्ट्रिक्शन रहा और उसमें जो आम लोगों का सहयोग रहा वो काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो सुरक्षा बल हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनका जो सहयोग रहा, उनकी जिस तरह की वो रही, वो बिल्कुल सराहनीय थी। निश्चित तौर पे पब्लिक का सपोर्ट रहा तभी जाकर के इतनी बड़ी जो बात हो सके और खासतौर पे कोई कैजुअलिटी नहीं अभी तक हुआ है। और इस तरीके से जो प्रिवेंटिव मेजर उठाए गए थे उसके वजह से एक भी जान नहीं गई है। लोग बिल्कुल शांति से जो सरकार की जो कदम थे उसका सहयोग किया और अपनी जो उनकी जीवन चर्या थी वो सामान्य गति से चलती रही। तो निश्चित तौर पे इतनी बड़े जो कदम उठाए गए बिना राज्य के जनता के सहयोग से ये संभव नहीं था और खासतौर पे सुरक्षा बलों के सहयोग से संभव नहीं था। इसका सरकार ने धन्यवाद दिया है जनता का और आगे भी वो उम्मीद करते हैं कि जनता इस तरह से सहयोग करेगी। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएंगे, स्कूल खुलेगी, लोग दुकानें खुलेंगी, टेलीफोन पे बात कर पाएंगे अपने परिजनों से, तो वो धीरे धीरे सामान्य की तरफ स्थिति बढ़ती जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। जी नितेंद्र, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने ये तो अच्छी बात रही कि रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात फेज वाइज कही, पर वहीं पे उन्होंने जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, जो पाकिस्तानी फंडेड टेररिज्म है, एलिटी की बात उन्होंने करी कि वो थ्रेट्स अभी भी हैं वैली में और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी ये एक चुनौती होगी आने वाले समय में। निश्चित तौर पे ये जो जितने भी कदम उठाए गए हैं वो जो सरकार को इनपुट मिले थे, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये कदम उठाए गए थे ताकि किसी की जान माल की नुकसान न हो और ये थ्रेट अभी भी बना हुआ है। इसीलिए सरकार इतने बड़े कदम उठाई थी और जैसे जैसे ग्रेजुअली इसमें थोड़ी थोड़ी से जैसे ढील दी जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि सिचुएशन किस तरह के है और उसको समीक्षा किया जाएगा तमाम बड़े स्तरों पे। तो वो थ्रेट अभी भी बना हुआ है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जनता के सहयोग से और सुरक्षा बलों के सहयोग से ये जो तमाम जो आतंकवादी ग्रुप हैं उन पे के जो मंसूबा है उन पे पानी फिरे और वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके, इसके लिए तमाम जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जी नितेंद्र, जो स्टेप्स बताए, जिस तरीके से धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जाएगा, आप श्रीनगर में हैं, वहाँ लोगों से बात भी कर रहे हैं, अपने आकलन से थोड़ा बताएं कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या रहे हैं अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस का दौर था और अभी जो जिस तरीके से ईज इन्हें करने की बात करी गई है वो क्या मायने रखेंगे लोगों के लिए?
देखिए, लोगों की सबसे बड़ी जो उम्मीद थी और मांग थी कि उनकी जो कनेक्टिविटी को सुधारा जाए ताकि वो लोग अपनों से बात कर सके, और सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते इस तरह के कदम उठाए हैं, और कल से एक तरह से वो बात कर पाएंगे अपने परिजनों से, और अक्रॉस जम्मू कश्मीर रीजन में वो टेलीफोन लाइन ओपन किया जा रहा है और लोग बच्चे स्कूल जा सके। तो सबसे बड़ी मांग लोगों की यही थी। बाकी उनकी रोजमर्रा के जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल आ जा रहे थे, अपने सामान जो जरूरतमंद की सामान थी वो उनको मिल रहा था, और अस्पताल में इलाज हो रहा था, तो आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। हम लोग भी सड़कों पे देख रहे हैं, घूमते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन कनेक्टिविटी जैसे मोबाइल की अगर और टेलीफोन की खुल जाएगी तो खास तौर पर वो अपने परिजनों से बात कर सकेंगे, ये सबसे बड़ी लोगों की मांग। जी नितेंद्र, ऑल्सो BVR सुब्रमण्यम ने ये बताया कि जो सरकारी दफ्तर है वो तो आज से ही खुल गए हैं और अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, तो थोड़ा बताएं ये क्या दफ्तर हैं और क्या इन दफ्तर के थ्रू क्या सर्विसेज मुहैया होगी लोगों को? देखिए, सरकारी दफ्तर चूंकि रिस्ट्रिक्शन थे इस वजह से बंद थे, लेकिन आज से वो खुल चुके हैं, जिसका असर सड़कों पर भी दिखा जा रहा है, और दफ्तर जब खुल गए हैं तो उनमें रोजमर्रा के जो कामकाज है वो चल रहा है। खासतौर पे जो जितनी भी राज्य सरकार की जो ऑफिसेज है उसमें लोग आए, अपने जो रोजमर्रा के काम है फाइलों को देखा, और बाकी जो जिस तरह की जो कई सारे फाइल पेंडिंग पड़े हुए तो उनको निपटाया, और ये सड़कों पे भी दिख रहा है आवागमन काफी ट्रैफिक उनको निपटाया, और ये सड़कों पे भी दिख रहा है आवागमन काफी ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले आज ज्यादा देखा जा रहा है, और कल से और भी इस पे बढ़ोतरी होगी। और जैसे मान लिया कई ऐसे आदमी लोग हैं जिनकी दफ्तरों में काम होगा तो वो मंडे से अपने जो भी सरकारी दफ्तर में उनके काम पेंडिंग होंगे उसको वो करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो एक सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल बहाल हो जाएगा, और जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे, और जो सरकारी दफ्तर में जो काम पेंडिंग थे वो सुचारू रूप से हो सकते हैं। All right, Nitendra, there. Thank you very much for joining us with those inputs from Srinagar. My colleague Nitendra Singh giving us update about the manner in which the restrictions are going to be eased and the impact on the locals in Kashmir in particular. This was, of course, in the context of a very important press conference that took place just a short while ago. Chief Secretary BVR Subramaniam had some important points to make. First, he importantly mentioned that there was no casualty with the period of restriction that was on, particularly in Kashmir Valley. There was not a single loss of life, and other important ways in which restrictions are going to be eased are that the government offices are already open in Kashmir. Schools are going to open from next week, from Monday. They also said, the administration said that mobile connectivity that has been a cause of concern is also going to be reinstated, is going to be available phase-wise and area-wise. Once again, let's turn to Srinagar. My colleague Rama Tyagi is joining us now. Rama, important press conference by the Chief Secretary, several key points in which the restrictions are going to be relaxed. Once again, just take us through what these mean for the people of Kashmir in particular. Yes, Shubhendu, it's a very important press conference in which Chief Secretary clearly stated that now things are moving towards normalcy, and some more restrictions will be eased out, and the main concern was the blockade of communication, which was to prevent some the efforts of some miscreants and some threat from he has taken names of Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, and some other terrorist designs also, and he was saying that to prevent any kind of these kind of mishappenings, these steps have been taken earlier, but now after reviewing the situation, they are going to ease out these restrictions phase by phase. Schools and colleges will be opened by Monday, and they will start it from rural areas. Communication will be open, and phone lines will be open phase by phase, and first of all BSNL would work functioning, and it will take time, but from tomorrow they are hoping that the phone lines will be
in place, and several others measure, and he has stated clearly this is because of the combined strategy of security forces, state administration, and yes, the cooperation of the people of Jammu Kashmir also, because they have patiently followed all the guidelines what are given to them, and Eid was celebrated very in a peaceful way. And yesterday we all have seen that how Independence Day was celebrated. So this was very important because there were certain concerns like communication and school and colleges and other things also. So he has cleared that all the things, there is nothing to worry about. Government is doing everything to facilitate common man, and phase by phase after reviewing the situation everything will be normal, absolutely normal. जी रमा, ये भी बताएं, चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जो इसेंशियल सर्विसेज थे वो रिस्ट्रिक्शंस के दौरान भी अभी भी जारी थे, कंटिन्यू थे पूरी वैली में। थोड़ा सा इंसाइट दें कि ये क्या इसेंशियल सर्विसेज थे। हमें मालूम है हॉस्पिटल्स पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे थे, थोड़ा सा और बताएं कि किस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल थी जो लोकल्स हैं कश्मीर के, श्रीनगर के, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। शुभेंदु, जितनी भी रोजाना की जरूरी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी रोजाना की जरूरियात होती हैं आम जीवन में, जिस तरह से हम देखते हैं वो सब अवेलेबल थी, चाहे वो चिकित्सकीय सुविधाएं हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे दवाएं हो या अन्य सुविधाएं हो। इसके अलावा जो खाने पीने की चीजें थी, जैसे कि ईद के मौके पर देखा गया था कि ओपन हार्ट्स जो है उनके घरों के पास लगाए गए थे या डोर स्टेप्स पर डिलीवरी की जा रही थी। इसके अलावा लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल और डीजल है या अन्य जरूरी चीजें हैं उनकी आपूर्ति जो है था कि जो पेट्रोल और डीजल है या अन्य जरूरी चीजें हैं उनकी आपूर्ति जो है, क्योंकि हाईवेज ओपन है लगातार हो रही है, तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रैफिक मूवमेंट था वो लगातार जो सामान्य तरीके से जारी था। लोग सड़कों पर आ रहे थे, अपने जरूरी काम कर रहे थे। इसके अलावा जो ऑफिसेस थे उनमें भी कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था। तो एक तरह से दो चीजें थी जो यहाँ पर लोगों के लिए चिंता का विषय था, जो कि स्कूल और कॉलेजेस या फिर जो संचार की सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई थी, और वो भी किसी भी अवांछनीय घटना को रोकने के लिए। और उसका भी आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भी अब बहाल हो जाएगा। जो आने वाला सोमवार है उससे स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, और जो संचार की सुविधाएं हैं वो कल से एरिया बाय एरिया सिचुएशन के अकॉर्डिंगली और सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंगली वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। शुभेंदु जी, रमा, कि देश का, राज्य का जो भविष्य है वो युवा हैं, वो बच्चे हैं, और ये जो एक बड़ी खबर आई है कि जो रिस्ट्रिक्शंस ईज होंगी उसमें जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो सोमवार से अगले सप्ताह से खुलना शुरू हो जाएंगी, तो कितना आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा? हम धीरे धीरे नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं श्रीनगर में, कश्मीर में। स्कूल का खुलना, बच्चों का अपने समय से स्कूल में जाना, अपनी पढ़ाई जारी रखना, कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट होगा जब हम नॉर्मलसी की बात करते हैं वादी में? देखिए, नॉर्मलसी की आप बात कर रहे हैं शुभेंदु, स्थितियां यहाँ पर जो सामान्य कार्य व्यवहार है वो सामान्य तौर पर ही चल रहा था, नॉर्मली ही चल रहा था। सिर्फ 2-3 चीजें थी, स्कूल और कॉलेजेस का खुलना, ये कब खुलेगा ये एक उत्सुकता थी, और दूसरा जो संचार की सुविधाएं थी वो जो है लोगों को उसमें लग रहा था कि ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ना वो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, ना आसपास से बात कर रहे हैं, या दूर दराज जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे उनका एक संचार स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो ये कुछ चीजें थी, लेकिन इसका भी सरकार बार बार साफ कर रही थी कि क्योंकि जिस तरह से जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं या फिर जो इंटरनेट है, इसका अगर पिछली कुछ इतिहास को देखें तो उसका दुरुपयोग हुआ, या पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से 2008 और 2016 के वीडियोस जो हैं आने शुरू हुए, या कुछ मीडिया ने कुछ भ्रामक प्रचार, इस तरह की खबरें आई कि कुछ दुष्प्रचार हो रहा है, तो उस पर लगाम रखने के लिए, जिससे कि किसी भी तरह का असंतोष न भड़के, किसी भी तरह की अवांछनीय कार्रवाई यहां पर ना हो, और किसी भी तरह के नापाक मंसूबे
सूबे यहाँ पर कामयाब ना होने पाए, इस वजह से इसे रखा गया था। लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ स्थिति की समीक्षा भी की जा रही थी। प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। लोगों को संचार की सुविधाएं, फोन लाइन्स उनके जरूर बंद थे, लेकिन सरकारी ऑफिस में या अलग से बूथ के द्वारा उनको बात कराई जा रही थी। ईद का त्योहार ठीक से मना, स्वतंत्रता दिवस जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया। तो प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था और ये भी देखा जा रहा था कि किस तरह से स्थिति को इतना नॉर्मल, इतना सामान्य कर दिया जाए कि दोबारा से ये चीजें बहाल हो सके। और आज चीफ सेक्रेटरी ने ये साफ किया कि जो सभी स्थितियों की समीक्षा की गई है, उसके बाद ये निकल कर आया है कि फेज बाय फेज अब इलाके के अनुसार देखकर जहां पर स्थिति कैसी है वहां पर उसके हिसाब से फोन लाइन्स खोली जाएंगी, स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और अब इस बात में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी रमा, धन्यवाद आपका इन सभी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बनी रहे हमारे साथ, अगले बुलेटिन्स में भी हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और पता करेंगे कि कैसे हालात हैं श्रीनगर में, खासकर आफ्टर द रिलैक्सेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस वर अनाउंस्ड बाय चीफ सेक्रेटरी BVR Subramaniam. My colleague Rama Tyagi was giving us a 360-degree update on the ways in which these relaxations that have been announced, whether opening of schools or restoration of mobile network, how it's going to further enhance the environment of normalcy in the valley. With those updates, we conclude this bulletin, but news and updates continue just after a short break. Namaskar. जल है तो कल है। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा। पानी बचाना है, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ DD न्यूज पर। A quick look at the day's top news. 100 big stories from across the country and the world in just 30 minutes. Watch Express News Monday to Friday, 7 p.m. only on DD India. दिन भर की सुर्खियों पर नजर, देश दुनिया की 100 बड़ी खबर सिर्फ 30 मिनट में। एक्सप्रेस न्यूज सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। संस्कृत में भारत की एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समुद्र विश्वस्य भाषाणां जननी भवति अस्माकं संस्कृत भाषा। संस्कृत जगत की हलचल। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ज्योतिकलश प्लवते। आधे घंटे में सब कुछ सरल संस्कृत में। संस्कृतस्य वर्णशास्त्रं व्याकरणशास्त्रम् एतानि सर्वाण्यपि अत्यन्त वैज्ञानिकानि। गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। वार्तावली शनिवार शाम 7 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जम्मू कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे प्रतिबंध। सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। फोन कनेक्टिविटी धीरे धीरे होगी बहाल। मुख्य सचिव ने बताया, सीमा पार आतंकवाद के खतरों के बीच एहतियाती कदमों से बची लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालय खुले। 22 में से 12 जिलों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य। 5 जिलों में लागू है कुछ प्रतिबंध। मुख्य सचिव ने कहा, सरकार का प्राथमिकता आतंकवादियों को राज्य की कानून व्यवस्था में व्यवधान डालने का ना मिले कोई भी मौका। अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को उच्चतम न्यायालय की कड़ी फटकार। कहा, याचिका की खामियां करने दूर। 3 जजों की खंडपीठ ने बिना आदेश सुनवाई की स्थगित।
केरल में बाढ़ की स्थिति में सुधार, सामान्य होते हालात के बीच घरों को लौट रहे हैं लोग। कर्नाटक से बाढ़ के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बाढ़ से राज्य में 40,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूटान की 2 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों को मिलेगी और मजबूती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शाम 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां के मौजूदा हालात के बारे में आज जानकारी दी गई। वहां के मुख्य सचिव ने बताया कि 22 में से 12 जिलों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अब तक किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है और कोई भी गंभीर रूप से भी घायल नहीं हुआ है। Restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally, with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. और मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए जाएंगे और इस हफ्ते के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। इसके साथ ही कल से श्रीनगर में लैंडलाइन फोन सेवा भी बहाल हो जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी फोन शुरू हो जाएंगे। The evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. After today's Friday prayers, which the immediate reports have gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. और मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन अब सामान्य रूप से चल रहा है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने उम्मीद बंधाई और कहा कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी शुरू किया जाएगा। Some restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally, with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation.
और साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेते हुए टेलीकॉम सेवाएं बहाल की जाएंगी, लेकिन श्रीनगर को लेकर उन्होंने कहा कि यहां संचार सेवाएं जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी फोन की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। You will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर वकील एमएल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्स्चर नहीं लगाया गया। मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा कि आपकी प्रेयर क्या है, कुछ पता नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके। हम आपकी याचिका को खारिज कर देते, लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को कम किए जाने पर 6 याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से 4 अभी भी दोषपूर्ण हैं और ये मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में डिफेक्ट दूर होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर का, जहां से श्रीनगर से हमारी संवाददाता रमा त्यागी सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा, आज मुख्य सचिव की प्रेस वार्ता में जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें ढील देने की बात पर जोर दिया गया, विभिन्न पहलुओं को सामने रखा गया। इस प्रेस वार्ता के बाद श्रीनगर के आवाम की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद जो है उनकी पूरी हो गई है और अब उन्हें राहत मिली है कि जिस तरह से संचार की सुविधाएं थी वो बहाल हो जाएंगी। तो जो एक दिक्कत आ रही थी उन्हें अपने आसपास के अपने रिश्तेदार थे या अपने बच्चे थे जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनसे बात करने में, हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम किए हुए थे, फोन बूथ से या अन्य मददगार केंद्र भी थे जहाँ से वो बात कर पाते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ता था या थोड़ा सा जो है आप समझ सकती हैं कि ये स्वाभाविक है कि एकदम बात नहीं हो पाती है, थोड़ा सा देर उसमें लगती है जब आदमी जाता है फोन बूथ पर या किसी अन्य ऑफिस पर या मददगार केंद्र पर। हालांकि उनके घरों के पास भी थे, लेकिन अब वो अपने जिस तरह से पहले बात कर पाते थे बात कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। कनेक्टिविटी जो है वो आप जानती हैं कि आज के युग में कितनी जरूरी है और वो जो है लेकिन वो अब बहाल हो जाएगी। और इस बात को लेकिन यहाँ के लोग, ममता मैं बताऊं, समझ भी रहे थे। जिस तरह से मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पाबंदियां लगाई गई थी इनकी मुख्य वजह थी जिस तरह का आतंकी खतरा था, कुछ टेररिस्ट आउटफिट्स के उन्होंने नाम भी लिए, जिस तरह से यहाँ पर एक दुष्प्रचार का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही थी। तो किसी भी अवांछनीय घटना को रोकने के लिए, और उसमें प्रशासन सफल भी हुआ है। मुख्य सचिव ने, आपने सुना होगा ममता, कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक भी इस तरह की मिसहैपनिंग की घटना की सूचना नहीं आई है और कंपैरेटिवली जो अगर पुराने आप समय देखें उससे बेहद सफल जो है इस बार का नियंत्रण रहा है, इस बार की जो सामान्य हालात बहाली रही है। और इसमें प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा बलों के साथ साथ उन्होंने आम लोगों का भी धन्यवाद दिया कि आम लोगों ने भी पूरी तरह से सहयोग किया, जिस तरह के दिशा निर्देश उन्हें दिए गए उसका पालन किया। प्रशासन ने भी जिस तरह के इंतजाम किए और आम लोगों की सहूलियत के लिए जो जरूरी सुविधाएं थी, जो एसेंशियल चीजें थी या जो चिकित्सकीय सुविधाएं थी या जो अन्य उनकी जरूरियात थी, उनको पूरा करने का पूरा ध्यान रखा। ईद का त्योहार जिस तरह से शांतिपूर्वक मना, स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ पर मनाया गया जो ऐतिहासिक रहा। तो तमाम ये सब ऐसे कदम थे जो सरकार के द्वारा उठाए गए, राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए, केंद्र सरकार की इन पर पूरी नजर थी। लगातार राज्यपाल दौरा कर रहे थे, एनएसए यहाँ पर लगातार यहाँ पर उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। तो आप देख सकती हैं कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी सुरक्षा बलों के साथ एक बेहतर सामंजस्य के साथ यहाँ पर जुटी हुई थी कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और लोगों को रिस्ट्रिक्शन के बावजूद किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो, और उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। ममता, बिल्कुल रमा, यानी कि पूरा प्रशासकीय अमला जो था वो लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित कराने में लगातार लगा हुआ था और इससे लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ा। लेकिन रमा, जैसे कि कहा
गया है कि भाई सोमवार से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। मान सकते हैं आप कि जो जिंदगी है वो पुराने ढर्रे पर लौट आएगी, सामान्य जो दिन भर की दिनचर्या है वो अब दिखने लगेगी। लेकिन इसमें लोगों का भी सहयोग, अभी तक का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया मुख्य सचिव ने, लेकिन आने वाले वक्त में भी हालात सामान्य बने रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो, लोगों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोग क्या अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं? बिल्कुल, लोग अपनी जिम्मेदारी को ममता पूरी तरह से समझते हैं और जिस तरह से एक भ्रामक दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी, विशेषकर 370 और 35A के बारे में, उसको भी लोग अब समझने लगे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेंद्र सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने यहां पर विभिन्न इलाकों का दौरा किया है या फिर उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत भी की है और उनका अनुभव भी यही रहा है कि जो आम लोग हैं वो धारा 370 या 35A से इतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कुछ गलतफहमियां उनके दिमाग में जरूर थी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने बहुत सारी चीजें साफ की, प्रधानमंत्री ने, राज्यपाल ने, या जो स्टेट मशीनरी की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स जारी हो रही थी, उससे तो काफी कुछ जो है उनकी समझ में आया है। और इस वक्त जो लोग हैं वो अपने विकास के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए या फिर जो उनकी जरूरियात है और किस तरह से वो आगे बढ़े, इसके लिए ज्यादा जो है कंसर्न है। और उसी को लेकर नितेंद्र, आपने यहाँ पर बहुत से युवाओं से बात की, तो आपको क्या लगा बातचीत के बाद, क्या निकल कर आया? किस तरह से जो लोग हैं, सहयोगात्मक रवैया तो उनका था और किस तरह से अब लोग धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात आपने बोला कि 370 और 35A को लेकर के उनका बहुत ज्यादा वो नहीं है। सबसे बड़ी उनको जरूरत है कि उनका विकास हो, उनके यहाँ बढ़िया स्कूल हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छी जॉब मिले, उनको रोजगार के अवसर हों। ये तमाम, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी गया था, बडगांव भी गया था, मैं ग्रामीण इलाकों में भी गया था, जो कम से कम 10 किलोमीटर तक अंदर मैं गया था, गांव में लोगों से बातचीत किया, तो उनका भी यही कंसर्न है कि हमारा विकास हो, शांति जी रमा, तो समझ सकते हैं हम कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो चीजों को समझते हुए अब सहयोग दे रही है। रमा और हमारे संवाददाता रमा और नितेंद्र जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन हमारे सभी संवाददाता जो जमीनी सच्चाई को हम तक पहुंचा रहे हैं वो लगातार इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र के फैसले का क्या क्या असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, क्या सुविधाएं, क्या अधिकार मिलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को। ये सच्चाई भी जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। फिलहाल रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के जींद में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो काम हुआ, हरियाणा के शहीदों को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटाना भारत की एकता एवं अखंडता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास करा। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो मां भारती का मुकुटमणि है, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। हरियाणा के जींद में इस रैली में अमित शाह ने कहा कि इस बार हमें 47 सीट नहीं चाहिए, इस बार 75 सीट मिलेगी, तभी भाजपा की विजय मानी जाएगी। मिशन 75 हरियाणा की जनता के आशीर्वाद के बिना नहीं होगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि खट्टर सरकार ने 5 साल मजबूत नींव का काम किया। मैं आह्वान करना चाहता हूं, अब की बार 75 सीटों के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाई। मैं तो हरियाणा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते झोली लेकर आया, हरियाणा वासियों ने मेरी झोली बड़े प्यार से कमल के फूलों से भरकर मुझे वापिस भेजा। मैं विधानसभा चुनाव में आया,
आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया, हरियाणा की जनता ने करा दिया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के प्रभारी महासचिव अनिल जैन सहित तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहे। हरियाणा में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और फिलहाल यह वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें डीडी न्यूज। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा का। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक में श्रद्धांजलि और एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेतागण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और अपने प्रिय नेता को याद किया। अटल जी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी अटल जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि भारत को एक बार इस्तेमाल की जा सकने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए विशाल अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की थी, जिसके बाद जावड़ेकर ने ब्राजील के साओ पाउलो में ये घोषणा की। भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा साओ पाउलो में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के तहत सभी हितधारकों को शामिल कर इस दिशा में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अभियान शुरू किया जाएगा। केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुरुवार को कुछ राहत मिली और कई निचले इलाकों में पानी कम हो गया, जिससे राज्य में स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई है। इस बीच प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 104 हो गई है, जबकि 34 अन्य लापता हैं।
देश के इस दक्षिणी राज्य में बारिश की तेजी में कमी आई है और प्रदेश के सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कन्नूर एवं कासरगोड जिले में गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जबकि इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के कारण जारी हिंसक गतिरोध का मानवीय समाधान ढूंढने की अपील की है। ट्रंप ने यह अपील इस आशंका के मद्देनजर की है कि चीन हांगकांग में सीधे हस्तक्षेप की योजना बना रहा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट संदेशों के जरिए इस बात के संकेत दिए हैं कि चीन के स्वायत्त शहर हांगकांग में 10 सप्ताह से जारी राजनीतिक अशांति का शांतिपूर्ण समाधान होने पर चीन के साथ व्यापार समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि चीन में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और हजारों कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Vaishnava
पीठ पराई जाने रे। संस्कृत में भारत की एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समुद्र विश्वस्य भाषाणां जननी भवति अस्माकं संस्कृतभाषा। संस्कृत जगत की हलचल। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ज्योति कलश प्लवते। आधे घंटे में सब कुछ सरल संस्कृत में। संस्कृतस्य वर्णशास्त्रं व्याकरणशास्त्रम् एतानि सर्वाण्यपि अत्यन्त वैज्ञानिकानि। गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। वार्तावली शनिवार शाम 7 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। The restrictions to be eased in a phased manner in Jammu and Kashmir. Schools to reopen gradually from Monday. The telecom connectivity to be restored in a phased manner. The Chief Secretary says preventive steps saved lives in the face of the cross-border terror threats. Government offices open in Jammu and Kashmir as 12 out of 22 districts are functioning normally. Some restrictions in place in 5 districts. The Chief Secretary says the government focus is on ensuring that the terrorists get no opportunity to disrupt law and order in the state. The Chief Justice of India pulls up the petitioner against abrogation of Article 370 for not filing the relevant documents. 3-judge bench adjourns the hearing without passing the order on the petition. Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa meets Prime Minister Modi regarding the flood situation in the state. The estimates total loss due to floods at more than 40,000 crore rupees. Floods subside in Kerala as no red or orange alert for any district today. The people return to their houses as situation normalizes. Prime Minister Modi to leave for 2-day visit to Bhutan. He will hold bilateral talks with the Bhutanese Prime Minister to also launch RuPay and the Bhim application in Bhutan. Hello and welcome. You're watching Doordarshan News. With me, Nancy Kohli. A top story. The Jammu and Kashmir Chief Secretary has said that the offices of the Jammu and Kashmir government were functioning normally in the valley while the schools will reopen next week. Addressing a press conference, he said that there has been no loss of life or major injury since restrictions were imposed on the 5th of August. And regarding the instructions in Jammu and Kashmir, he said that the centre had put in certain steps as a precautionary measure against the cross-border terror after the government's decision to abrogate Article 370 in the state. Some restrictions were required on 14th and 15th of August in view of Independence Day celebrations yesterday, for which the terror threat perception was certainly greater, particularly in the light of the statements from across the border, which most of you have seen. As things stand today,
12 of the 22 districts are functioning normally, with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. And in fact, the Indian Army has refuted the claim of the Pakistani Army that 5 Indian soldiers have been martyred in the cross-border firing across the LOC. The Army said that the ceasefire violation by Pakistan was carried out by the Pakistani forces in Naugam and the Krishna Ghati sector that was responded to appropriately and befittingly. But none of our own soldiers have either got injured or martyred. Earlier yesterday, the Pakistani Army admitted that 3 of its soldiers were killed in the ceasefire violations in Poonch. The Indian Army had warned last week that the Pakistani Army Twitter handles are trying to spread misinformation and falsehoods in view of the Article 370 being abrogated in Jammu and Kashmir. And the Supreme Court has expressed anguish over defective petitions challenging the scrapping of provisions of Article 370 of the Constitution. A bench headed by the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, said that the petition by Advocate M.L. Sharma challenging the scrapping of Article 370 has no meaning. The judges said that the petitioner is not praying for setting aside the presidential order. It is not clear what the prayer is, and added that there were 5 other petitions in the registry that are defective. The Chief Justice also added that he spent 30 minutes reading the petition on Article 370 but could not make out anything from that. The Apex Court has asked the lawyers to cure defects in their 6 petitions on Article 370 and adjourned the hearing. The Supreme Court also said that it will wait for some time before passing any direction on the plea seeking removal of the restrictions on the media in Jammu and Kashmir after the centre said the curbs are being lifted gradually. And during the hearing, the centre told the Apex Court that the situation is improving in Jammu and Kashmir and that the curbs are being lifted gradually. The Solicitor General Tushar Mehta said that the government is doing review on a day-to-day basis. And the Union Home Minister Amit Shah has asserted that the scrapping of the special status of Jammu and Kashmir is a big milestone for the unity and the integrity of the country, and that will ensure development of the state. He also said that Prime Minister Modi's announcement on Independence Day on creating the post of the Chief of the Defence Staff will only strengthen the country's defence manifold. Addressing a public rally in Jind in Haryana ahead of the Haryana elections, the BJP national president said that the revocation of the provisions of the Article 370 of the Constitution would help develop Jammu, Kashmir and Ladakh and make the region free of the menace of terror. Also saying that the Modi government scrapped the special status of Jammu and Kashmir in 75 days of coming to power in its second term, he slammed the previous Congress-led governments for not doing it for the past 72 years of rule because of vote bank greed. He also praised the Haryana Chief Minister Manohar Lal for eradicating corruption and bringing transparency in the recruitment in the government jobs in the state. The elections in Haryana are due in 2 months. सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास करा। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक
कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। Prime Minister Narendra Modi will embark tomorrow on a two-day visit to Bhutan, during which the two strategic allies will explore ways to further strengthen and diversify the bilateral partnership. The Prime Minister will also launch RuPay and the Bhim application during his visit for the benefit of the Indian tourists. Prime Minister Modi will also interact with the students of the Royal University of Bhutan. Our correspondent had an exclusive interview with Indian Ambassador to Bhutan, Ruchira Kamboj. After assuming office for the second time, this would be the first visit of PM Modi to Bhutan. And to speak more on that, we have the Indian Ambassador to Bhutan, Ms. Kamboj. Let's talk to her and find out. Ma'am, welcome to DD News. In view of the neighborhood first policy, how crucial is this meet of the Prime Minister and this visit of the PM? Well, as you know, Bhutan is a very special partner of India. There is no big brother role that we play here. Everything that we do in Bhutan is per the wishes and aspirations of the people of Bhutan and as per their wishes and priorities. This cooperation has extended in diverse sectors. Of course, there are regular political visits. There is economic cooperation. There is hydropower cooperation that you know. And today the relationship is expanding into new frontiers such as space science and technology, STEM education, also in the financial sector. As you know that we are looking into the launching of the RuPay card during the Prime Minister's visit, and also we will be working towards the launch of the Bhim app at a later stage here in Bhutan. Coming to the financial sector, RuPay and Bhim app would play a crucial role in the digital economy of Bhutan, because we have a lot of people from India traveling to Bhutan as well. So I think that will greatly benefit the Indian tourists, because as you know we are moving from a cash to a card economy, and actually from a card to a cardless economy. So that will obviate the need for the Indian tourists to carry cash, and I think will greatly facilitate convenience. As far as the second phase is concerned of the RuPay card, which I think we should see next year, the banks of Bhutan will issue RuPay cards which will facilitate the visit of Bhutanese tourists to India, as also the many Bhutanese students who study in India. So I think this is a very important step towards cross-border interoperability. India has already been playing a crucial role in the road development of this country. Now we have a direct access from India to Thimphu, and also the hydroelectric projects. So tell us more about that. India has been playing a large role, not since today, but since the very beginning. So as you know, we have Project Dantak here in Bhutan, and they have played a crucial role in the socio-economic development of the country, as you say. Currently they are maintaining about 630 kilometers of road, and this is a brand that is well known and well liked across Bhutan. As far as hydroelectric power cooperation is concerned, I think there too India has played a big role. In fact, during the Prime Minister's visit, we will be launching a stamp marking 50 years of hydropower cooperation between India and Bhutan, beginning from Chukka, Tala, Kurichu, and now Mangdechu, and going forward, looking forward to the Sankosh hydroelectric power project. And when we talk about the two countries, Prime Minister has been talking about the younger generation, and this time he would also be interacting with the students of Royal Bhutan University. So how interesting would that be? Well, I think that is, if I may say so, one of the high points of the visit. There is great excitement and enthusiasm in Bhutan, and the Royal University, which is the only university of Bhutan, has, I think, put together and crafted this program with a lot of love and care, and it is matter of great pride that Prime Minister will be addressing the youth, because when you talk of India-Bhutan relations, you must also look at the future, and the youth are the future of the India-Bhutan relationship. So I think this address is much anticipated and one of the highlights of the program. So there you heard the ambassador. She says that it is going to be a very crucial and important meeting between the two prime ministers and also between the two countries, and the audience with the king would be playing the key role in this visit of the Indian Prime Minister. On the first death anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Shraddhanjali and Sarvadharm Pratna Sabha was held in his memory at the Sadaiv Atal Memorial in New Delhi. President Ramnath Kovind and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to Atalji.
Union Home Minister Amit Shah, the BJP working president JP Nada and other leaders of the party also paid tribute to former Prime Minister. The late Atal Bihari Vajpayee's daughter Namita Kaur Bhattacharya and granddaughter Niharika paid tribute at the Sadaiv Atal. Atal Bihari Vajpayee was the 10th Prime Minister of India and was the Member of Parliament for 4 decades. He was one of the main founders of the Jan Sangh. Atal Bihari Vajpayee was also the first Prime Minister of the NDA government to complete 5 years of the non-Congress Prime Minister's office without any obstacle. In response to Prime Minister Modi's call to make India free of the single-use plastics, a massive public campaign will be launched engaging all the stakeholders. The Environment Minister Prakash Javadekar will review all the initiatives and also campaigns in this regard and chalk out a concrete plan to realize the target. The minister was addressing a gathering to celebrate the 73rd Independence Day in Sao Paulo, Brazil. An update now on the flood situation that has subsided in the parts of Kerala as no red or orange alert for any district remains in force. People are returning to their houses as situation has normalized, and with the abatement of rain, sun brought respite to flood-hit Kerala since Thursday as the water receded in many low-lying areas and the state began to return to normalcy, even as the toll in the second spell of the southwest monsoon rose to 104 with 36 missing. There was no red alert warning in any of the 14 districts of the southern state as the intensity of the rains decreased. But the monsoon though remains active with a well-marked low-pressure area lying embedded in it over northeast Rajasthan and adjoining areas of northwest Madhya Pradesh and southwest Uttar Pradesh. The well-marked low-pressure area is very likely to move gradually along the monsoon trough and weaken after 48 hours. Widespread rainfall with isolated heavy to very heavy and extremely heavy falls are very likely over Rajasthan during the next 48 hours. A constructive interaction between the monsoon low and an approaching western disturbance is likely to cause fairly widespread rainfall with isolated heavy to very heavy falls over the western Himalayan region, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi, and West Uttar Pradesh mainly during 17th and 18th August. Enhanced rainfall activity with isolated heavy to very heavy rainfall likely over the sub-Himalayan West Bengal and Sikkim and Assam and Meghalaya during the next 2 to 3 hours. 2 to 3 days, that is. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation from the ramparts of the Red Fort yesterday on the Independence Day. He counted many milestones and raised several issues and challenges that lie ahead for the nation. And one of them is the rapidly increasing population in the country. At the current rate, India will become the most populous country in the world by next decade, putting severe pressure on families and nation's resources. Here's more. Prime Minister Narendra Modi laid great emphasis over the issue of population control in his Independence Day speech. Prime Minister said, rapidly increasing population poses new challenges for us and future generations. Good family planning is a sign of patriotism. Parents must consider if they can fulfill the needs of child. We need to worry about population explosion. Governments have to come forward through different schemes. If population is not educated, not healthy, then neither home nor the country can be happy. एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहाँ
बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो न वो घर भी सुखी होता है, न वो देश भी सुखी होता है। Let us understand India's population challenge by means of data. At current rate, India is set to become the most populous nation in 2027, surpassing China. India's population has been growing at a much faster rate than China's, with the poor regions contributing the most to that growth. India's population ballooned from 555.2 million in 1970 to 1.366 billion now, a 146% expansion. China's population grew at about half that pace, 73%, from 827.6 million to 1.43 billion. India's fertility rate is currently at about 2.24, with wide variation across states. It stands at 1.6 in Tamil Nadu and West Bengal, and 3.3 in Bihar and 3.1 in Uttar Pradesh. The fertility rate in the rural areas is much higher than in the urban areas. India's growing population poses more challenges than opportunities. Need for higher investment in education and healthcare system. Need for more food, more housing, sharp increase in drinking water supply, pressure on infrastructure such as roads, transport, electricity and sewage. More candidates for fewer jobs. Nation will need to raise resources through taxation and other means. Impact on nation's forest and water resources. Therefore, population control continues to be a major challenge for India, and the need for decisive steps to manage this explosion is higher than ever before. Bureau Report, TD News. In fresh trouble for the Samajwadi Party leader, the district administration has demolished walls of a resort belonging to Abdullah Azam Khan, the son of Samajwadi Party MP Azam Khan, over illegal construction. The Enforcement Directorate had initiated a money laundering probe following allegations that a university run by him in Uttar Pradesh's Rampur has been built over a land taken in the violation of the enemy property law. They are accused in several land grabbing cases. And moving on now to some international news. The Hong Kong police has affirmed that 748 people have been arrested since a large-scale anti-extradition bill protest erupted on the 9th of June, with 115 people prosecuted. The police officials also added that 15 police officials have sustained varying degrees of eye injuries due to protesters' use of the handle laser light. Police tactics are toughening after 10 weeks of increasingly violent confrontations between the police and protesters plunged Hong Kong into turmoil. And in a new major development in the contentious trade war between the US and China, China has now vowed to counter the latest tariffs imposed by the US on $300 billion of Chinese goods. Now both the powers are set to hold trade negotiation meetings in Washington in September. The US President Donald Trump has expressed that the trade war between the both would last soon. He also said that China wants to make a trade deal. And in a decision that came as a shock, North Korea said it will never sit down with its southern counterpart for talks again. The decision came out despite recurrent warnings by North Korea to South Korea to stop its joint military drills with the US. The Korean neighbors were on an amicable term till tensions due to military drills with the US arose. North Korea's official news agency said in a statement about the decision taken by its government. And North Korea in fact said on Friday that it will never sit down with South Korea for talks again, rejecting a vow by the South Korean President Moon Jae-in to pursue dialogue with Pyongyang made the previous day as he pledged to bring in unification by 2045. The North has protested joint military drills conducted by South Korea and the US that kicked off last week, calling them a rehearsal for war, and has fired several short-range missiles in the recent weeks. And it also said, as it will be clear, we have nothing more to talk about with the South Korean authorities and we have no desire to sit down with them again.
That was, of course, the statement that came in from the Committee for the Peaceful Reunification of the country. Also, the committee added that it is the North's government outfit tasked with managing relationship with the South. The rival Koreas remain technically at a war under a truce ending the 1950-53 Korean War. The comments were carried by the official news agency of North Korea. And South Koreans held a vigil against Japanese Prime Minister Shinzo Abe in Seoul, calling for an apology and compensation from Japan for its wartime crimes of forced labor. The rally came as the country was commemorating the 74th anniversary of Korea's independence from Japan's 1910 to 1945 colonial rule. The dispute triggered after a South Korean court ordered the Japanese firms last year to compensate some of their former laborers. And in more news from around the world, the Argentines protest after 25% of the peso's value was wiped out in lieu of ongoing economic crisis and a shock election result. Carrying signs of no to the IMF and we want a raise, the Argentines marched through the downtown streets of the capital to draw attention to the dire conditions that many Argentines are currently facing. The Argentina President Mauricio Macri promised to raise the minimum wage, temporarily freeze gasoline prices, and also increase the income tax bracket floor by 20%. And moving on now, while Nick Kyrgios's feud with umpire Fergus Murphy boiled over during an explosive outing at the Cincinnati Masters that left the Australian player 13,766 points lighter in the pocket and facing a possible suspension from the ATP. Nick Kyrgios is once again in hot water after walking off the court to smash 2 rackets and calling an umpire expletives. After winning the opening set in his 3-set defeat by Russia's Karen Khachanov in Cincinnati, Kyrgios was hit with a time violation in the second set for taking too long between serves. Shortly after his outburst, Kyrgios took a bathroom break, which umpire Murphy, citing not enough time remaining at the changeover, refused him permission to take. Having left the court with 2 rackets, cameras caught the world number 27 breaking them before making his way back to the court. Kyrgios appears likely to be seeded for the US Open starting on August 26. This is not the first time Kyrgios has expressed his displeasure at umpire Murphy's decision-making. 2 weeks ago at the Washington Open, the Australian clashed with Murphy before going on to win the tournament. Sports Desk, DD News. And in some more sports news, the 3-member Cricket Advisory Committee comprising Kapil Dev, Anshuman Gaikwad and Shantarangaswamy will announce the head coach this evening at 7 when it addresses the media. Now, the Kapil Dev-led committee started the interview process for the selection of India's head coach at the BCCI headquarters. A total of 6 shortlisted candidates, Ravi Shastri, Tom Moody, Phil Simons, Mike Hesson, Lalchand Rajput and Robin Singh will be interviewed throughout the day. The incumbent head coach Shastri and Simons will join the interview via Skype from the West Indies, and the other 3 candidates, that's Hesson, Rajput and Singh, were present in person to give their presentation. And in some other news now, the space tourism moved a step closer to reality as Virgin Galactic unveiled its new mission control at a spaceport. The company is offering customers a few minutes in space. It will also allow them to float in the spacecraft's cabin and see the curvature of the Earth through huge windows. The spaceship is a cross between a plane and a rocket. It is released at a high altitude by a carrier plane and then ignites its own engine, traveling at 3 times the speed of sound. And around 1,500 twins and triplets of all ages gathered in Brittany in France to celebrate the Twin Festival in northwestern side of the country. The festival that hosts twins from France and other countries is a major hit and has been in trend since 1994. Famous for its summer gathering, the festival allows twins to meet other twins. This year celebrates its 25th year. Les Olympiens pour les jumeaux.
And with that, it's a wrap on this edition of the news. But news and updates will continue here on Doordarshan News. For the moment, thanks for being with us. भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और ऐसे ही हौसले और जज्बे की बदौलत सारा आसमान नापने वाले लोगों की कहानियां लेकर हाजिर हुए हम गुड न्यूज इंडिया के एक और नए नवेले एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज इंडिया में। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम